Now it's audible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. So we will, as I have finished the mapping, we will go through the interior of Earth. So this class is for the filling and for the mains as well. That is why sharing the link in all group. Now we will go through the structure of the Earth. Last class, last four classes, five classes I have taken. Mute कर दिया जो मनकर on mute अच्छी. In that class, we were able to finish the mapping around the world. We did all the mapping. Okay, though I have left like mapping of ocean and basically the ocean mapping I have not done, but that is also though I not say not required, but the paucity of time also. Time is a constraint. So here we will go through the interior of the earth. First earth केंद्र देखा जाए interior देखिए सर पहले पीडीएफ था screen सर में लास्ट देखिए में पहले पीडीएफ था शेयर करिए सर So here you can see got the don't worry. Now the interior of the earth हमें देखिए the interior of the earth को जो पहले देखो फटाफट देखिए कारण हमको खत्म करिया पड़िबो only 60 days is left hence we have to finish the using the interior earth যদি আমি ଦେଖିବା ଯେମିତି last class ରେ ଆମେ discuss କରିଥିଲେ like the Sial, Sima and Nife. So here is the Sial. ये तमे देखिପାରିବ this one is the crust ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ Sial itself a Sial. Then comes to the Sima, then it would be your what? Sima. Then comes to your Nife. So these are the chemical division of the earth. So this one is about chemical division of the earth. Cl stands for what? Silica and aluminum. Then silica and magnesium, nickels and ferrous. So these are what? That is the chemical composition of the earth. Okay. So overall, what they will ask you, either they will ask you which element is highest in the earth crust. যদি তোমাকে question পচারিব, the crust is having different sort of element. So here would be oxygen. Here would be what? Oxygen. ध्यान से मन रखिबा, oxygen is the highest element in the crust. Crust रे oxygen होची सबठु अधिक. But overall earth रे होची iron. But overall earth रे जति हमें देखिबा then iron is the highest concentration. But when it comes to the crust only, then it would be only oxygen. So oxygen will have highest concentration of the element among the all elements. है ना ये क्वेश्चन तुमको बेसिक क्वेश्चन पचारे. Then earth रो average density केते ये भी क्वेश्चन पचारे that is the 5.5. तो 5.5 होची average density, maximum केते 13.5. maximum केते density equal 13.5. average density होची 5.5 है ना. तो ये तुमको बेसिक जिनस फटाफट मु कवर कर दउची. So the maximum density केते रहबो तुम्हारो 13.5. एक मिनट. So maximum density हम कहले कितने 13.5 and average wrote on 5.5. This would be what density. So the highest density obviously in the core, and here is the core. You can see 6,378 kilometer from the surface. So highest density would be here, that is the 13.5 density, and least density होची तुम्हारा crust, that is the 2.72, 2.8, that will be the density. So overall density तुमको देखा जाओ कितने 5.5 and it would be 13.5 would be the maximum. So these would be the density. Now density कहीं की change हुई यदि तुम कहबो कि surface रे density एतिकी बा crust we are having crust is having less density, whereas the density is increasing towards the center because of two factor. जदि तुमको पचारो कि density कहीं की बढ़ुची कि why core is having the so much of density because of pressure plus denser material. Two factors. So যদি তোমাকে পচারে कि why core is having so much of the density because of overlying pressure and denser material. Denser material, that is the what? That is जोटा तुमको लिखा है nickel and ferrous. That two are the denser materials. That is why their concentration is maximum in the core and
and hence we are having the denser part of the earth also in the core. Now question arises, why that the Nephi, or that is the what I am using nickel and ferrous, they are concentrated into that place only. ती जगह कहीं रोचे बिकॉज जति तुम कौन कर लेट्स से गोटे कौन कर बाल्टी आम कि पानी रखा तो बहुत सारा डट्स पकेबा डट्स लाइक आयरन वुड माने डिफरेंट डेनसीटी मु कहूँ कि सेम डेनसीटी डिफरेंट डेनसीटी डट्स को काच गुली कि पत्थर गुली कि आयरन रही कि निकेल पकई दियो देन ताको स्टीयर कर देखो सेंटर को जोड़ा हेवी पार्ट्स गुड़ा से सेंटर को मूव करके पड़े जाबो सेम जितने अर्थ तुम लिक्विड थिला एंड इट वाज आल्सो रोटेटिंग ये मध्य कौन करथिला रोटेट करथिला एंड द हेवी पार्टिकल्स दे मूव इनटू द सेंटर बुझ परछन जो लाइटर मटेरियल्स दे विल मूव इन द पेरिफेरी तेनु करके कौन करू छ जेहेतु इट वाज इन लिक्विड स्टेट रे थिला इट वाज अ फायर बॉल सो दैट हेवी पार्टिकल्स और द हेवी मिनरल्स दैट सेटल इनटू द कोर बुझ परिबो सिंपल ये रे तोर डेंसिटी रो कथा रहला है ना देन केमिकल डिविजन आम ताको कही ये भी आम देखा ना ये जो तुम तीन टा रहा दिस वुड बी सॉलिड ये तुम जो कोरटा सॉलिड मेंटल इन लिक्विड दिस वुड बी इन लिक्विड एंड सॉलिड सो ओवरऑल डिविजन इज व्हाट सॉलिड लिक्विड सॉलिड so that would be the overall division of the earth the crust would be solid and the middle part would be liquid and also the down part or the interior part is also the innermost part also solid so this would be solid liquid and the solid would be the combination ये रहेगा तुम्हारा कौन combination now why this combination यदि तुमको पचारिबो ये combination कहीं की देखा जाए कि why earth core is in solid ये कहीं की solid अछि not liquid है ना ये कहीं की लिक्विड रे नहीं तार आंसर हैला जदि तुमको पचारो कि कहीं की नहीं और हमें जानू छ केमिति जदि तुमको पचारो heavy कि particles. ना तो ये भी हम देखिबा दैट मींस सरफेस तुम कहला देन सॉलिड लिक्विड एंड सॉलिड कोन ये जस्ट हमें रट्टा मारी छे कि ना यार लॉजिक अछि यार लॉजिक होछि कोन के जदि तुमको कह जो एटा सॉलिड रे कहीं के अछि अगेन बिकॉज़ ऑफ द प्रेशर अगेन बिकॉज़ ऑफ द व्हाट प्रेशर enormous pressure because of the pressure ସେଥିପାଇଁ for example pressure cooker ର ମୁଁ କହୁଛି pressure cooker ରେ ତମେ जो ऊपर लीड खाई जानिଛ ତ लीड ଯଦି अपलिफ्ट न हो ସିଝିବନି ପରିବା ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ ଦବାକୁ ପଡିବ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ସେମିତି अर्थ ର जो इंटीरियर अर्थ रे कोथे बहुत ही ज्यादा प्रेशर ताको गैप मिलुनी लिक्विड हवा पाए दो द टेंपरेचर इज हाईएस्ट but despite the temperature that area is not able to convert into the liquid because of it's not getting the ample space जो space दरकार था उसने मिलू जेमती कि मु कहली प्रेशर कुकर सेथिपे लीड थाए तो लेटर ऊपर को उठी गले तापर से कौन को लिक्विड बुझ हो सके ये same condition would be here the here is that means your mental and crust is putting enough pressure and enormous pressure it's not enough it is enormous pressure over the core and hence it is not able to make itself a liquid zone despite the temperature how much 6000 degree केते रहबठी जो तमरा इनर मस्ट कोर रे टेंपरेचर केते थाय 6000 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू द सरफेस ऑफ सन इक्वल टू द सरफेस ऑफ सन दैट इज द फोटोस्फीयर and that is the what photosphere so that would be equal to the photosphere है ना डन सो नाउ ऑल एम देखि चले दैट मींस हमको कौन मिलला कि व्हाई सॉलिड एबे जानि परिबो नाउ ध्यान से सुनिबो देन व्हाई दिस वन इज अ लिक्विड कि मेंटल काहे कि लिक्विड रे थाए मेंटल एथि पे लिक्विड थाए बिकॉज़ ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक ये बिकॉज़ ऑफ द व्हाट दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक है ना दैट इज ब्रेकिंग ऑफ रॉक तो ये रीजन रे कौन करे रॉक ब्रेक ही परिबो एंड इट विल गेट टाइम एंड स्पेस सिंपल मुको भी टाइम तो कहबिनी हियर वुड बी व्हाट स्पेस तो आपको स्पेस मिलिबो एम्पल स्पेस जो थ्रे से लिक्विड ही परिबो बुझि परछन तो कारण जो स्पेस आपको मिलू नहीं एंड तो ये रहबो तमरो रीजन कि व्हाई इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट ना बुझा पर एबे डन ना मैक्सिमम आमे डेंसिटी काहे की जानि देले एंड आल्सो व्हाई सर्टेन पार्ट्स इज नॉट टर्निंग इनटू द लिक्विड ना एबे जदि तुमको क्वेश्चन पचार जबो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर
through which we could know the interior of the earth. Option 1, earthquake. Option 2, that is the earthquakes or the seismic waves. Option 3 is a tsunami. Option 4, all of these. So answer would be what? All 2. of these. Answer would be only what? It would be 2, seismic Sir, waves. B only. So answer would be what? Seismic waves. So that means এটি কোন হইব কারণ সুনামি দ্বারা তুমি কেমিতি জানিব সর ইন্টেরিয়র প্রথম কথা এটি ক্যান্সেল করিয়ার ଥିଲା না সুনামি ইজ এ সারফেস ফেনোমেনা তো যেহেতু ইয়ে সারফেস ফেনোমেনা তো সুনামি কেমিতি হব অল অফ দিস এটা ক্যান্সেল হয়ে গেলা তো ইয়ে যদি ক্যান্সেল হଉଛି দেন অর্থকুইক ହେଇ ପାରିବ and seismic ହେଇ ପାରିବ ବଷ୍ଟ ସେଥିରେ ଲେଖା ଥାଏ ତମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଦେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଅ କି ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଥାଏ कि which of the following is the most appropriate answer ଯେତେବେଳେ ତମର ଆନ୍ସର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁକଲେଟ୍ ଆସେ ତା ଉପରେ ଲେଖା ଥାଏ कि the most appropriate would be taken as the answer ବୁଝିପାରୁଛ and the most appropriate is that is the what seismic waves. So here would be the what answer would be seismic waves. So seismic waves is the only way now as of now the present time the modern time रे जति हमें देखिबा in the modern time the seismic waves is the मतलब ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ कि through which we could know the interior of earth in a detailed fashion way ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତା ଦ୍ୱାରା सर ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ सेस्मिक वेव सर ऑल ऑफ द एबव काटी माने सेटा न थाई कि जदी एर्थ माने वोल्केनिक इरप्शन थांता कोन होबो सर ऑप्शन ता volcanic eruption ହେଇ ପାରିବ one source ହେଇ ପାରିବ volcanic ହେଇଥିଲେ ହେଇପାରିବ ହେଲେ A B B C ଏମିତି ଥିବା ଦରକାର କମ୍ବିନେସନ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ହବନି volcanic ହେଇପାରିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କ'ଣ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ସିସ୍ମିକ୍ ତାଠୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି volcanic eruption ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ source to know the interior of the earth interior earth को ଜାଣିକି volcanic eruption ଟା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ source ବଟ୍ ଏଠି ଅପସନରେ ତ ନଥିଲା ନା ଦୁଇର ଅପସନରେ କମ୍ବିନେସନ୍ ବି ହେବା ଦରକାର ଯେ କମ୍ବିନେସନ୍ ନାହିଁ ତ କ'ଣ କରିବ ତମେ କୁହ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଡନ୍ तो एबे आमे देखिबा ना लिक्विड कोन पे तुमको ये रहउची एबे बुझी परिबो है ना व्हाई द कम्स टू द ये तुम टिके देखि देबो 6378 किलोमीटर इनर मोस्ट द कम्स टू द क्रस्ट एबे आमे क्रस्ट को आसीबा क्रस्ट तमर जदी क्रस्ट को देखिबो इट्स अप टू 0 to 100 किलोमीटर कारण मु तुमको कहतली इट वुड बी व्हाट लगभग 70 किलोमीटर तुमको देखा जिवो 70 to 100 किलोमीटर कोठी कोठी देखा जाए एंड 5 to 30 किलोमीटर मु तुमको कहतली कोन थाए दैट इज द ओशियनिक प्लेट है ना तो दैट मींस दीटा मिसी की कोन करिवो तमरो क्रस्ट फॉर्मेशन करिवो सो क्रस्ट इज व्हाट दैट मींस योर कॉन्टिनेंट प्लस ओशन तो ध्यान से मन रखियो जो क्रस्ट इक्वल टू कॉन्टिनेंट प्लस ओशन हियर कॉन्टिनेंट मींस जो थ्रा में रहउछ एंड ओशन फ्लोर एंड इट वुड बी व्हाट ओशन फ्लोर ये दीटा को मिसेले तुमको कोन मिलिबो क्रस्ट ना बुझा पड़िबो ओशन फ्लोर बुझिपारछन दैट मींस आमे कहबा ओशन फ्लोर प्लस कॉन्टिनेंट इक्वल टू क्रस्ट एंड क्रस्ट को कोन कहवा जे रिजिड मास इट इज आल्सो कॉल्ड एज द रिजिड मास बुझिपारछन आपको कोन कहवा जे रिजिड मास बिकॉज ऑफ द रॉक आपको कोन कहबा हमको आपको रिजिड मास मध्य कहवा जे बिकॉज ऑफ यू आर हैविंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रॉक्स हियर okay ये रहो तुम्हारा क्रस्ट डन एवरीवन now comes to the ocean floor the ocean floor thickness mu तुमको कहतली 5 to 30 that would be the thickness of the ocean floor and from 70 to 100 would be the continent so जदि हम देखिबा the maximum it would be 100 kilometer तो ये रहो that means तुम्हारा जो lithosphere sorry crust up to 100 kilometer the crust up to 0 to 100 kilometer बुझा पड़िबो now this crust is having different type of rock like it would be igneous rock metamorphized rock and sedimentary rock ये तीनटा rock एतरे थाए बुझिपारछन this crust is comprised of three rocks igneous rock metamorphized rock and it would be sedimentary rock ये तीनटा को मिसी की होबो तुम्हारा crust डन है ना ये है तुम्हारा crust that means the crust को हमें rigid mass मध्य कहो that would be the crust जदि सेथिरे upper mantle को मिसै देबा then it would be lithosphere that means crust plus upper mantle equal to lithosphere so crust plus upper
mental equal to lithosphere. Answer mark crossed plus upper mantle equal to lithosphere. And what would be depth of the lithosphere? Up to 200 kilometer. Up to what? 200 kilometer. 100 kilometer was your crossed, and hence 100 more will be added in form of the astronosphere. Now it comes to the astronosphere. What exactly that one? Now the middle spheres or the middle layer of the earth is the mantle, which comprises itself 60 to 70% of the total volume and the mass of the earth. Answer manko eta both important. The mantle itself consists of 60 to 70% of the total volume of the earth. This total earth volume ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ମେଣ୍ଟାଲ ପାଖରେ। and total weight ମଧ୍ୟ ତାର ଅଧିକ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? तो ये रहिबो तमरो मेंटल। ना मेंटल को हमें देखुचे तारो अपर एंड लोअर पार्ट। दिस वुड बी योर व्हाट? लोअर मेंटल, दिस वुड बी अपर मेंटल। ना दिस वन इज टोटल इज मेंटल। ये रहिबो टोटल टा कोन तमरो मेंटल। ताकू दी भाग भाग कराइछि लोअर एंड अपर। अपर मेंटल रो अपर पार्ट ध्यान से रखबो। अपर मेंटल रो अपर पार्ट दैट इज द आस्थोनोस्फियर। Now this astronosphere also is very important and the significant sphere astronosphere ये गोटे ट्रांजिशन जोन। सिंपल astronosphere कोन? गोटे ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट लेयर दैट इज द व्हाट आम केवल लिथो दैट इज द क्रॉस्ड एंड मेंटल। क्रॉस्ड और मेंटल भितर गोटे ट्रांजिशन जोन दैट इज द astronosphere जोटा कि सेमी लिक्विड। जोटा कि सेमी लिक्विड बस ये होची कोन? सेमी लिक्विड। ये को स्टेज रो छी? दिस वन इन सेमी लिक्विड। ए कोथरे छी तमरो सेमी लिक्विड। कारण भाबो ऊपर कोन अछि मु तुमको कहिछि सॉलिड, तळे कोन अछि लिक्विड। तो मझिरे कोठी ना कोठी तो गोटे सेमी लिक्विड हबो ना हबो कि? and that transition zone obviously that would be in the transition zone, and that transition zone is what? Astronosphere. That transition zone is astronosphere. Done everyone? And this is a very thin layer as well. तो astronosphere रे तमे कोन मिसै देबो? क्रॉस को मिसै दे इक्वल टू तमरो लिथोस्फियर 200 किलोमीटर। डन। ना एबे ध्यान से सुनी दियो। all the geographical relief जेते हमरो geographical relief अछि, relief like the mountains, relief like plateau, plains, all that they are floating over the astronosphere. They are what? Floating over the astronosphere. जेते हमरो relief अछि like the mountain, plain, plateau, hills, they are floating over the denser astronosphere. Our density अधिक 3.5 and here would be the 2.7. So density vary करे 3.5 to 4.2, that would be the astronosphere density. Because of the density difference, the mountains, all these that means sort of the reliefs, they are floating over the astronosphere. These plates, that means jete tomorrow plates achi, all are floating over this astronosphere. Done everyone? Now comes to the mental. Mental mu tumko koi dechi ke 60 to 70% of the total volume of the earth covers by the mental. है ना? ये कवर करे and also total mass as well आर मतलब सबको अधिक। Done fast. Now this one in liquid stage ए कोथरे अछि तमरो liquid stage रो अछि। ताकू हमें दी भागरे भाग करूचे that would two, that is the what? It would be lower and upper part. Lower part and upper part. Two parts is having two parts. Okay. Now mental रो सबसे important phenomena होछि thermal convective current. Thermal convective current. So the most important fact of the mental is thermal convective current. Now that is what जाकू कहाचे, जाकू discover की करथले Sir Arthur Hall. Sir Arthur Holmes. Now this mental thermal convective current is the main source driving the plates. ध्यान से मन रखो। this thermal convective current मु कहली thermal convective current which here current कोन करे एमती सर्कल हे कि एठी कोन करूची the number of circles is there that rotating बुझ बछ नै माने कोन करूछंती rotate करूछंती and these are their what ए माने कोन करूछंती thermal convective current produce करूची बुझ बछ नै। so because of that current ये कोन करूची जो current produce करूची ता द्वारा कोन होची they are the driving force of the plate। जेते तमरो प्लेट अछि ये होची ड्राइविंग फोर्स बुझ बछ प्लेट पई ये होची मेन ड्राइविंग फोर्स and that is very important and the significant as well।
देन ये तुमको गला देन आम कोर को आसवा कोर को मुझे कौन कहती इट वुड बी निफे या को कौन कह जाए निफे तो निफे बिकज केमिकल कंपोजिशन दिस वुड बी व्हाट ये रहा तुम केमिकल कंपोजिशन एग्जाम अच्छे 30-60 दिन पिलांकर निद भांगुनी सका बुझीपार मैंने जापर कि सीरीयसनेस कौटी मैंने ओएस देवे बुझीपार नहीं एग्जाम अच्छे 60 डेज मुझे कैलकुलेशन करके देखली कि केमी तुम मत मत निद होनी केमी तुमको नोट दि जाव केमी क्लास सर तुमको केमी निद हो मुझे जापर तापर 8टा बेले परमिशन मांगो मत क्लास रे एंट्री दियो नहीं कि तो ये रहा तुम कौन कोर कथा मुझे कहीदे दैट इज निफे है ना तो ये रहा तुम कौन द इनर मोस्ट पार्ट द केमिकल कंपोजिशन ये रहा केमिकल कंपोजिशन है ना ना कम्स टू द एबे ये तो देखिपर डिफरेंट लेयर क्रस्ट अच्छा क्रस्ट को मध्य आउ कौन कह जाए किसी फैक्ट्स कही दूची द क्रस्ट को मध्य कह जाए एग सेल दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द व्हाट एग सेल आपको मध्य कौन कहती एग सेल एंड द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ये कौन थिनेस्ट लेयर ये सब तुम थिनेस्ट लेयर है ना द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ और द एग सेल डन एंड हियर वुड बी लाइक द यक जो तुम यक थाए बुझीपार एटा हूँ से यक जो येलो पार्ट बुझीपार एंड दिस वुड बी द व्हाइट पार्ट ये हूँ एग व्हाइट जमी एग व्हाइट ये सेमती मेंटल एंड एग व्हाइट रो एरिया सब अधिक थाए एंड दैट इज ऑल्सो लिक्विड बुझीपार ये तुम देख यकटा लगभग सॉलिड टाइप रो थाए बुझीपार लगभग मुझे कहनी पूरा सॉलिड so that is a combination would be solid liquid solid so these are the combination ये तुमको केमिति जानिबो थ्रू द सिस्मिक वेव्स मु तुमको कहि देबी काहे कि जानिबो सिस्मिक वेव्स नाउ कम्स टू द क्रस्ट ऑलरेडी आमी कहि दैछे क्रस्ट है ना अपर मोस्ट पार्ट ये तो तुम्हारा मेंटल आमी जान जाइछे आउटर कोर इनर कोर प्रेशर एठी देखा इवन एठी कोन लिखा है मु तुमको कहितली द आउटर कोर एंड इनर कोर्स आर इवन हॉटर विथ अ ग्रेटर व्हाट प्रेशर एठी प्रेशर सबठो अधिक तेना ओवरलाइंग ड्रॉप रो प्रेशर पड़िबो हियर इज द क्रस्ट ना क्रस्ट मु तुमको कहितली द ओशन क्रस्ट मथ कहिछि एंड जाको बासाल्ट कह जाए एटा मु तुमको लास्ट क्लास रे कहितली है ना आ पूर्व तुमको कॉन्टिनेंटल कहिछि एबे तुमको कोन कहितली C+O इक्वल टू क्रस्ट एटा मु तुमको कहितली हां कि नहीं दैट इज कॉन्टिनेंट प्लस ओशन C+O এটা তোমাকে কইছে অলরেডি ক্রস কইছি এক্সেল বদি কই দেইছি আর ডেনসিটি মধ্যে 2.7 2.8 অলরেডি তোমাকে কই সারিছি एवरेज डेंसिटी है ना एठी तुमको देखा जब कोन ए रहला मिनरल्स ध्यान से देखबो ये तुमको एलिमेंट लिखाइ नै एठी कोन लिखाइछि मिनरल्स लिखाइछि केतेटा एलिमेंट मिसिले गोटे मिनरल्स हबो बुझि परछो नै सो हाईएस्ट एलिमेंट व्हाट दैट इज द ऑक्सीजन बट एलिमेंट रे तुम जदि देखबो इट वुड बी फेल्सपार बुझि परछो and mica that is the what minerals here would be minerals but confuse होबन एलिमेंट है ऑक्सीजन मिनरल्स होची फेल्सपार है ना ये रहबो तमरो कंफ्यूज एतरा होबन है ना क्या केतेटा एलिमेंट मिसले ही गोटे मिनरल्स हबो हियर यू कैन सी द डेंसिटी तो एठी तुम देखि परबो ओशन प्लेट रो थिकनेस कम हियर ओशन प्लेट रो थिकनेस कम बट द थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंट इज मैक्सिमम ये कथा मथे तुमको क्वेश्चन एंड हाईएस्ट थिकनेस कोठी दिखा जबो हिमालय रे बिकॉज़ ऑफ इट्स हाइट ये कथा कहितली लास्ट क्लास रे तुमको नाउ कम्स टू द लिथोस्फियर ए लिथोस्फियर मु तुमको कोन कहितली मिसेबो कहा को मिसेबो कहितली सेथरे अपर पार्ट ऑफ द मेंटल एठी तुमको कहैतला क्रॉस प्लस अपर पार्ट इक्वल टू व्हाट दैट इज द लिथोस्फियर इटसेल्फ व्हाट 200 किलोमीटर लिथोस्फियर है ना ये रखो लिथोर अर्थात रॉक और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द रॉक स्फीयर बुझियो और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द रॉक स्फीयर दैट मींस दिस जोन इज डोमिनेटेड बाय द रॉक्स एंड थ्री सॉर्ट ऑफ द रॉक्स one would be your primary rocks or that is the igneous rock then as per tomorrow sedimentary rock then as per metamorphized rock all three rocks ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ତ आपको କୁହାଯାଏ lithosphere କହିଲେ କି ସବୁ type ର rock ଦେଖାଯିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି that is why the name is lithosphere three types of or the all sort of rocks
Now comes to the lithospheric plate. ना आम देखा लिथोस्फेरिक प्लेट ना ये गोटे जिन तुमको आड कर दिए प्लेट रो मीनिंग कौन प्लेट हूँ फ्रैगमेंटेड पार्ट एट द क्रस्ट सिंपल मुझे कहबी फ्रैगमेंटेड पार्ट ऑफ द क्रस्ट fragmented part of crust. This could be what? Fragmented part of the crust. For example, this one you could see the plates. Now plates are what? Fragmented part of the crust. प्रथम कथा मन पड़ो कि प्लेट्स कौन अर्थ जो आमर अछि लाइक द एक सेल जेमति एक सेल को जदि तमे हाथ रे भांगी देबो दैट से जो एक सेल थाए ताको भांगी देल छोट छोट पार्ट्स रे कन्वर्ट हो जिवो तो ईच पार्ट इज द प्लेट बुझि परछन लाइक एक सेल तो एक सेल टा पूरा बड़ टाइम ते गोटे स्फेरिकल शेप रो अछि बुझि परछन ताकू जे तुम भांगी देबो ये गोटे खंड हो जिवो ये गोटे एमति छोट 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 खंड खंड हो जिवो एंड ईच आर ए सिंगल प्लेट ना बुझा पड़ो नै सिंपल ना ये फ्रैगमेंटेड केमिति होछि because of the endogenetic force because of the endogenetic force तमे कहबे ताले सर ये फ्रैगमेंटेड हैला केमिति आमे तो ये ठीक अछि हाथ रे भांगी देले बट ये केमिति होछि because of that is what endogenetic force endogenetic force कहले the force coming within the earth the force endogenetic कहले from within the earth जो force को आसुची ताकू कहै छै endogenetic force exogenetic forces कहले outside ना ध्यान से देखिबो तमर जो फोर्स अछि ताको हमें फोर्सेस फोर्सेस को हमें दी भाग रे भाग करथाउ वन वुड बी तमर एक्सोजेनेटिक कहले आउटसाइड एक्सोजेनेटिक्स रो सोर्स होछि के सन एक्सोजेनेटिक रो सोर्स होछि के सन नाउ देन कम्स टू द इंडोजेनेटिक फोर्स आर सोर्स के होछि मेंटल आर सोर्स के मेंटल ध्यान से रखो जोटा आउ टिके पूर्व तो कहथली थर्मल कन्वेक्टिव करंट आउ टिके पूर्व कहथली थर्मल कन्वेक्टिव करंट एंड दैट इज द मेन सोर्स ऑफ द इंडोजेनेटिक फोर्स ध्यान से रखो अगेन एंड मेंटल रे कोन देखा जिवो थर्मल कन्वेक्टिव current so that is the main source of the endogenetic force whereas the sun is the main source of the what exogenetic force 15 days मु देइछे ना रिवीजन करे पई तो देखिया अरे एटा बुझेला ना डी पड़े एटा बुझेलानी ना मु कहली कि जो हमर प्लेट्स अछि लेट्स से द प्लेट्स आर व्हाट दे आर द फ्रैगमेंटेड पार्ट दे आर द व्हाट फ्रैगमेंटेड पार्ट कहले अर्थ जेमति कि एमति अछि अर्थ रो सेलटा और दिस वन इज द क्रस्ट को जदि हम एमति छोट छोट पार्ट रे डिवाइड कर दोचे दीज आर द प्लेट्स ना ये डिवाइड केमिति होची बिकॉज ऑफ द सम फोर्सेस किसी तो फोर्स थिबो ना एनर्जी थिबो ना जे आपको एमति छोट छोट खंड खंड करूची एंड दैट फोर्स इज द एंडोजेनेटिक फोर्स तार मीनिंग हैला द फोर्स कमिंग विद इन द अर्थ भीतर आसुची बुझि परछन अर्थ भीतर आसुची अर्थ विद इन द अर्थ आसुची आ सेटा पुनी कोठी ओरिजिन होची फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी एठी देखा एंडोजेनेटिक फोर्स रो पावर हाउस होची ये होची तमरो मेंटल रे माग्मा गुडा कोन थाए सर्कल हे की बुलु थाए माग्मा जाको कहे सर्कुलेशन ऑफ द माग्मा और थर्मल कन्वेक्टिव करंट है ना एथरे माग्मा को बुलु थाए सर्कल हे की बुलु थाए सेवन को कहे थर्मल कन्वेक्टिव करंट ना कन्वेक्टिव करंट एथि पई कोन गोटे जेमति देखो प्रेशर कुकर रे पानी जेतरा हम बसुचे बा पानी गरम करूचे से पानी कोन ही थाए सपोज ये गोटे पॉकेट एथरे पानी को हम हीट करूचे तळे सपोज हम फायर देचे बा हीट दोचे हम से वाटर टा कोन करियो बॉईल हुई कि नहीं दैट वाटर कोन करिवो जो वाटर तळ पार्ट टा आगे टच करिछि जो गैस रे तमे पानी टा बसैछो आगे तळ पार्ट टा टच करूछि सेटा के हीट हबो से हीट हैला पर लाइट हे के ऊपर को आसीबो हाँ कि नहीं ऊपर आसले पुणी कूल हम पुणी तल को जीव तो से जो पानी सिझौ तो तुम से गोटे करेन्ट डेभलप हुए जोटा कि आमको जना पड़ू ना आखि की सो सेमिति तुम कौन हुए मेंटल रे मध्य एमती करेन्ट डेभलप हुए बुझिपारछन सो लाइक दैट द करेन्ट इज बीइंग आल्सो प्रोड्यूस हियर इन द मेंटल सेम प्रोसेस रे सेमती ऊपर को जीव कूल हम डाउन करिवो ना बुझिपारछन एंड दैट इज व्हाई ये रहबो तुमरो ड्राइविंग फोर्स एमती करेन्ट डेभलप होची कोठी मेंटल रे ऑलवेज यूनिवर्सल ऑलवेज
and that is the main reason for the driving the plates. ये कौन करे प्लेट को ड्राइव करिबारे हेल्प करे देन एवरीवन है ना ये कौन करियो प्लेट को ड्राइव करबे हेल्प करबे गोटे करंट डेवलप करूची ना से करंट कौन करे से करंट दी प्रकार तमरे गोटे करि परिबो कंप्रेशनल दैट करंट विल प्रोड्यूस कंप्रेशनल फोर्स or it would be tensional force, two forces है ना that current is producing what two forces compressional and tensional forces तो से current कौन करूची दी प्रकार फोर्स करूची केतेला तमरो कंप्रेशनल ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟେନ୍ସନାଲ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନା ଏବେ ତମେ ଯଦି କହିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଠି ମୁଁ କଣ ଲେଖିଲି ଥର୍ମାଲ କନଭେକ୍ଟିଭ କରେଣ୍ଟ ଏ ଦି ପ୍ରକାର ଫୋର୍ସ ଜେନେରେଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ହେଲା କମ୍ପ୍ରେସନାଲ ଗୋଟେ ହେଲା ଟେନ୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ରେସନାଲ କେମିତି ହୁଏ ତାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଡାଇଗ୍ରାମ ଡ୍ର କରିକି ହବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାରଟା ଅଛି ଏଇଟା ମେଣ୍ଟାଲ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଠି ଗୋଟେ सर्कल ଗୋଟେ ମାଗମା ଏମିତି सर्कल ରେ ବୁଲୁଛି କହିଲେ କ୍ଲକୱାଇଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ ବୁଲୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ ବୁଲୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ ସ୍ଲାବ ଟା ରଖିବି ଏ ସ୍ଲାବ ଟା କଣ ହେଇଯିବ କମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଯିବ ତା ବୁଝା ପଡିବନି ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି ଏମିତି ବୁଲୁଛି तार आंटी क्लॉकवाइज ये तार क्लॉकवाइज एपटे एपटକୁ ଯାଉଛି ଏପଟକୁ उल्टा डायरेक्शन ରେ ଯାଉଛି तो हियर वुड बी स्ट्रेचिंग एठी कोन हो स्ट्रेच हे दियो दैट इज द टेंशनल फोर्स ना बुझा पड़िबनी दैट मींस तमरो थर्मल कन्वेक्टिव करंट दैट इज द मेन फोर्स फॉर द प्रोड्यूसिंग कंप्रेशनल एंड टेंशनल फोर्स which are the driving force of the plate on the surface तो तमरो क्रॉस होची क्रॉस here and there move करूची that is because of the thermal convective current done everyone सर ये जो स्प्रेडिंग साइट रहला कि कन्वर्जेंस बाउंड्री रहला ताले तो सेटा ए कन्वेक्टिव फोर्स सकासे हाँ सेथिमे तो कहूची तुम जहाँ भी होची दैट इज द बिकॉज ऑफ दैट फोर्स आउ किछि नै ओके है ना तो ये रहइबो तमरो एबे प्लेट्स रे बुझि गेलो हाउ द प्लेट्स आर मूविंग द प्लेट्स आर मूविंग बिकॉज ऑफ दिस फोर्स बुझिबो दैट इज व्हाट थर्मल कन्वेक्टिव करंट दैट इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप ऑफ गोटेला टेंशनल गोटेला कंप्रेशनल and that is why plate tectonic is तो एथि पाई तोर प्लेट टेक्टोनिक होची जो प्लेट बाउंड्री था जेंति द सबडक्शन कल सेठी कोन हो दीटा मीट करिवो बुझबो दैट वुड बी व्हाट कंप्रेशन कल सेठी कंप्रेस करूची आ जोठी डाइवर्जन बाउंड्री दैट इज टेंशनल फोर्स ए बुझ परछ दैट मींस द प्लेट सब मूव करूची बिकॉज़ ऑफ दिस फोर्स बस डन हे जीवना जीवन ऑनलाइन रो छबे ओके तो सर ये रहबो नेक्स्ट हमें प्लेट्स सर को जीवा हां को को पचरा कौन होला पचारो ओके देन प्लेट को आसीबा ना प्लेट दैट मींस एबे मु कोन कहली प्लेट होची तमरो प्लेट के मु कहली प्लेट कोन प्लेट र डेफिनेशन होची सिंपल डेफिनेशन द फ्रैगमेंटेड पार्ट ऑफ द क्रस्ट and they are none of the plate is permanent can be permanent no they are always moving here and there कोटा गोटी इंच मूव करूची कोटा दीटा इंच मूव करूची के इंच बा सेंटीमीटर रे बुझो ताटा सीएम रे इंच रे नो सेंटीमीटर रे तो हेडा हमको जाना पड़े नाही सेति में कारण गोटी वर्ष रे जदी 2 सेंटीमीटर मूव करे तो जाना पड़े तो स्पीड जाना पड़ेबनी so that is why but all the plates are moving here and there जे तुमको एबला क्वेश्चन आसीबो कि प्लेट्स काहे की मूव करूची because of the thermal convective current and all the plates are moving here and there केही भी permanent all are stationary oh sorry that is the mobile all are what that is mobile all are mobile ध्यान से एबे हमें देखिबा ताले जो प्लेट थाए प्लेट को हमें कोन करू on the basis of nature ताको दी भाग रे डिवाइड करू one would be तमरो continental one would be oceanic two type of plate thai continental and ocean ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ mixed ଆଉ ଗୋଟେ कोन ଥାଏ mixed तो साधारणतः थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट्स अछि गोटे ହେଲା continental गोटे ହେଲା oceanic गोटे ହେଲା mixed एला तमर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बट ऑन द बेसिस ऑफ साइज जति हम देखा अगेन तमर तीन प्रकार साइज रे देखिबा तीन प्रकार गोटे ହେଲା लार्ज गोटे होला लार्ज प्लेट और द मेजर प्लेट large plate or major plate on the basis of size major plate minor plate micro plate on the basis of size major minor micro now there are seven major plates there are seven major plates फटाफट लिखुथबो
है ना, देयर इज नो टाइम टू डाई बुझी पड़छ कि नहीं मूवी तो कन्वेक्टिव मूवी तो देखी थो ना नो टाइम टू डाई है ना रिलीज सही है मतलब नो टाइम टू डाई सही भले चलो 60 days ओनली लेफ्ट नहले डेली गाली सुनिबो एमती मोटे बुझी पड़छ कि नहीं मो पाखरे सिंपैथी नहीं ओनली पाठ पढ़ी के आसबो देन आई विल हैव सिंपैथी अदरवाइज नो सिंपैथी बुझी पड़छ कि नहीं So this would be the major plates are what North American plate, South American plate, then tomorrow African plate. Major plates I am detecting here. Here would be tomorrow Pacific, then would be Eurasia. So it would be 5. Then comes to Antarctic, then Indo-Australia. Here would be Indo-Australia or the Indo-Australian plate. So these are the what 7 major plates. ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ 7 major plates ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରିବେନି ଦିଟା ଆମେରିକା ଆଫ୍ରିକା ୟୁରାସିଆ କେତେ ହେଲା 4 ହେଇଥିଲା ପାସିଫିକ 5 ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା 6 ହେଇଥିଲା and Indo-Australia. So these are the major 7 plate है ना 7 plate done है ना सर ठीक हेलो हाँ हाँ कुह सर केवल जे वाटर बॉडी केवल कौन कहले केवल केवल वाटर बॉडी केवल जे वॉइस केवल आसुनी वाटर तुमको प्लेट टेक्टोनिक हबो केवल वाटर मुझे हेले सर प्लेट केवल जदि वाटर बॉडी रहबो केवल वाटर रहइबो हाँ केवल वाटर तो जदि मीन्स वाटर बॉडी रहइबो हाँ प्रथम कथा तो प्लेट देख टेक्टोनिक कोन सर हेइ पाइबो प्रथम कथा शुणी सार तमें कहल क्वेश्चन कौन कि सर जदि केवल आज्ञा वाटर रहिबो केवल वाटर रहिबो प्लेट टेक्टोनिक हबो कि नहीं वाटर सहित प्लेट टेक्टोनिक रो किछि रिलेशन न थाए प्रथम कथा प्लेट टेक्टोनिक रो रिलेशन थाए डेंसिटी आज्ञा जो प्लेट रो डेंसिटी अधिक रहिबो बट आज्ञा डेंसर प्लेट विल मूव डाउन लाइटर प्लेट विल फ्लोट्स एबव इट ये होची बेसिक कांसेप्ट बुझि परछ नै आउ से वाटर किछि एसुरो किछि भी कांसेप्ट नै बा सेमानको किछि रोल मध्य नाही नाउ क्वेश्चन कम्स टू यू दैट मींस तमे पचारि छ बट तमे ठीक से पचारि पालनी दैट मींस तमे कहया कथा दीटा ओशियनिक हेई परिबो कि नाही प्लेट बट हेई परिबो बुझिबो ओशियनिक तमरो प्लेट टेक्टोनिक हेई परिबो इथरे किछि डाउट नै फॉर एग्जांपल लेट्स से तमको कहजो ये तमको साउथ चाइना सी देखा जो तमको साउथ चाइना सी रे कारण मु तमको प्लेट तीनटा प्लेट थाए गोटे थाए मिक्स्ड थाए गोटे कॉन्टिनेंटल और गोटे ओशियनिक तो जो मिक्स्ड पार्ट रो फॉर एग्जांपल दिस वन ये जो तमे देखि परिबो एटा हला तमरो नाजका प्लेट और लेट्स से एठी तमे सबटु बेस्ट एग्जांपल दोछु ओशन रो हियर इज द फिलिपिन प्लेट जोटा कि गोटे ओशियनिक प्लेट एंड ये रहो पैसिफिक प्लेट ये भी गोटे ओशियनिक आ दीटार सबडक्शन एठी होची ता द्वारा फॉर्मेशन होची कोन ना तमरो मारियाना ट्रेंज बुझि परछ आ तो एठी तमरो आंसर मिल गेला दैट मींस दीटा ओशियनिक मध्ये हेई परिबो ओनली डेंसिटी डिफरेंस दरकार बुझि परछ बिकॉज़ पैसिफिक प्लेट इज larger and heavier than the Philippines hence it will subduct below the Philippines plate बुझि परछ ता द्वारा तमरो कोन हबो ओशन सबडक्शन डन एवरीवन बाकी प्लेट टेक्टोनिक तुमको पढ़ा हबो है ना सो मूव ऑन तो मु तुमको कहतली ब्रोकन पार्ट ये ऑलरेडी मु तुमको कह देछि प्लेट्स रो मीनिंग्स कोन प्लेट्स रो टाइप्स मु तुमको कहतली एंड साइज अनुसार नेचर अनुसार नाउ इफ कम्स टू द माइनर प्लेट तुम कहबो सर माइनर प्लेट किसी कहि दियो टोटल माइनर प्लेट अछि 20 बट 20 रो 20 हमको दरकार नै माइक्रो प्लेट होछि इनफिनाइट तार संख्या किछि नै बुझि परछ प्रथम कथा नाउ दैट मींस हम पाखरे रहिला कोन माइनर 20 के हिसाब करिया है ना 20 रो 20 दरकार नै तो फटाफट देखो माइनर प्लेट फास्ट देखियो हम माइनर प्लेट हियर वुड बी द कोकोस दैट ज्वांडी फुका नाचका कैरिबियन दिस वन कैरिबियन that is like Arabian there would be Arabian ये तुम्हारा Anatolian Turkey then कई Indian को कहती बर्मा अच्छी then तुम्हारा फिलिपिन प्लेट है गला जापान प्लेट है गला ते these are the minor plate फटाफट तुम देखी पर उनके लोकेशन ज्वांडी फुका here is a small one ज्वांडी फुका
here is the cocos blue color रे तुम देखि परियो दीटा then Nazca all are the oceanic plates all are the East Pacific oceanic plates बुझि परछन तीनटा देखो then comes to the what Caribbean plate here is the तो एठी तुमको चारटा मिल गेला अच्छा एठी आउ गोटे अछि कोन स्कॉसिया एटा मैपिंग रे मध्य मु करैथिली स्कॉसिया ये तुमको कहितली देन आसबो अरेबियन आउ एबे टर्की रे अर्थक्वेक हेतिला तो अरेबियन प्लेट टर्की प्लेट बा अनाटोलियन प्लेट ताकू कहै छै अनाटोलियन तो दिस सेमती तुमरो से फिलीपींस ये भी तुमरो माइनर जापान माइनर देन तुमरो जाभा सुमात्रा बर्मा ये सब तुमरो माइनर जाभा सुमात्रा बर्मा बुझि परछन तो एमती दीज आर द माइनर प्लेट बुझि परछन एमती बहुत गुडा हमको 20 माइनर प्लेट अछि बट ए सब दरकार नै एथि पई कारण ऑल डज नॉट इन्वॉल्व्स कन्वर्ट दैट इज अ प्लेट बा हमरो प्लेट टेक्टोनिक करे नै केतेटा हेले तुमरो 12टा आ छोटे मोटे एटी सेटी अछि दरकार नै बिकॉज़ ये इंपोर्टेंट एथि पई एंडीज फॉर्मेशन करोछि ये इंपोर्टेंट एथि पई रॉकीज फॉर्मेशन रे हेल्प करोछि ये एथि पई तुमको अनाटोलियन एबे कहिछि बा टर्कियन प्लेट बिकॉज़ एबे अर्थक्वेक हेछि से तुम पचारि पारे बुझि परछन एंड हियर इज द अरेबियन प्लेट अछि एंड ये तुम फिलीपींस प्लेट जो मारियाना ट्रेंच को फॉर्मेशन करुछि जापान प्लेट अछि माने ये तुम रहबो दीज आर द माइनर प्लेट तो हमें प्लेट को हमें देखितले साधारणतः तीन प्रकार अछि तुम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट साइज मध्ये हमें तीन प्रकार देखिबले प्लेट एबे बुझि पारियो प्लेट कोन ना कम्स टू द मेंटल ऑलरेडी मु पढाई देछि मेंटल को कहि देछि सबटु लार्जेस्ट लेयर मध्ये कहि देछि मिडिल मध्ये कहि देछि हेवी वेट तुमको कहि देछि ना एठी तुमको देखा जिवो एठी आस्थनोस्फियर आरो ऊपर पार्ट अछि ना ऑलरेडी मु तुमको कहिछि क्रस्टल प्लेट को मूव करिबारे ये साहाय्य करे बोली कहिछि तुमको ऑलरेडी कहि देछि द मूवमेंट ऑफ द मिडिल लेयर आस्थनोस्फियर इज द रीजन दैट क्रस्टल प्लेट्स ऑफ द अर्थ इज मूविंग ऑलरेडी मु कहि देछि that the force which is coming at the endogenic force generating from the mental is the responsible for the moving of the plate ऑलरेडी हमें डिस्कस कर सकछे आना डेंसिटी मु तुमको कहितली है ना ऑलरेडी 3.2 4.5 एटा 5 जाय नै छिवो कारण आर डेंसिटी आर पुनी दीटा अछि केले अपर मेंटल लोअर मेंटल रो डेंसिटी 5.5 5.7 अप टू 6 जाय पळे छिवो हला आर डेप्थ देखो 2900 इनसाइड द अर्थ कहले हमें केते 200 टू नै की 2900 ना बुझा पड़िबो 200 टू नै की 2000 that is what 900 that is your mental आपको कौन कहछे mental here would be एठी तमे देखि दियो silicate minerals like the iron magnesium एठी लार्जली तुमको देखा छो iron and magnesium तो ये रहबो तमरो mental डेप्थ हैला 200 टू नै की 2900 डेंसिटी लिखाई छी तमरा हैविंग एटा मीन डेंसिटी एठी अच्छा एठी मीन डेंसिटी लिखी छी बुझो मतलब एवरेज ता किंतु सेथि पे मु तुमको कहली ये तमरा अप टू 6 जाई पारे 6 6.5 7 बुझ परछन दैट वुड बी द डेंसिटी एटा मीन लिखाई छी है ना दैट मींस ए स्टार्ट हो केते 3 3.5 रु स्टार्ट है की 6 6.5 7 एमती तमरो बुझ परछन lower part to 8 जाए से जाए करे तो that would be the density then depth हमें देखते ले astronosphere तार upper part जोटा कि semi liquid रो अछि already में देखि दै छै बुझ बस तो हमें एबे तळक जिवा next slide को जिवा ना astronosphere already मु तुमको कहि दै छी आपको पढ़ से है ना ये semi liquid zone रो अछि या कोन ट्रांजिशन जोन इट्स अ ट्रांजिशन जोन तो गोटे सेमी लिक्विड जोन बुझि परछन आपको एमिति ही मन रखो फटाफट देन फास्ट तमरो एठी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होइला ये तमरो कोन अछि एठी लिख कहितले ना कन्वेक्टिव करंट एठी कोन लिखै छै कन्वेक्टिव मेंटल इक्वल टू कन्वेक्टिव करंट बुझा परछन इक्वल टू कन्वेक्टिव करंट now here is the astronosphere कोन सेमी रिजिड और लिक्विड रिजिड अर्थ कोन पूरा सॉलिड ताले एठी सेमी रिजिड इक्वल कोन ना पूरा सॉलिड ना पूरा लिक्विड like the सूजी का हलवा बुझि परछन ना it does not liquid nor it completely solid in between the state of the material is in between the state of the material is in between the middle part and it's a hot asphalt देखा जबो under the heavy weight मतलब बुझि परछन एठी तो देखा जबो ऑब्वियसली ऊपर की अछि क्रस्ट अछि ता तळे आर डेंसिटी केते कहतली 3.5 so that it is what
helping the crust to float above it. Density difference ସବୁ है ना ये रहबो and this is more but ये होची तमरो जेते तमरो डेंजरियस लाभा थाए ना ये एठू आसे that is the source जेति तुमको की कहबो source होची ये astrospheres the sources of magma the sources of magma जाकू आमे surface रे कहूचे लाभा surface रे कोन कहूचे लाभा that is coming from here से एठू आसुची ठीक है जीवा मूव करिबा थर्मल कन्वेक्टिव करंट ऑलरेडी मु तुमको कहि सारी छी हियर इज द कन्वेक्टिव करंट है ना ऑलरेडी मु तुमको कहि देछि त तातारा दुईटा फोर्स जनरेट होछि गोटे होछि कंप्रेशनल और गोटे होछि टेंशनल फोर्स तो हियर इज द कन्वेक्शन करंट इट इज नॉट थर्मल कन्वेक्टिव करंट जाको कहजे ऑथर होल्म ताको करथले मु तुमको कहितली पानी जेंति ऊपर को जीवो पुनी तार सर्कल करे ओसर को जाई कि कहीं आउथरे डाउन हबो बिकॉज़ कूल हबो एठी तम लिखाइ छी देखो कूलिंग श्रिंकिंग राइजिंग ए सब लिखाइ छी जहा तुमको कहै छी कुछ वर्ष ना बुझा पड़े दैट मीन्स कौन सी जिनस फॉर एग्जांपल अगेन कहूँ सपोज ये गोटे बकेट जो पानी रखिकी ताकू हीट दौच गैस रे तो तल पानीटा आगे हीट हम से ऊपर को जीव ऊपर बोले कूल हम पुणी तलक आस पुणी हीट हम ऊपर को सो दैट गोटे करेन्ट डेभलप होची बकेट रे पानी सिझेला बेले जोटा कि हमको जना पड़ो ना सेम इज हैपनिंग टू दिस स्फीयर दैट इज द व्हाट कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल से जोटा राइज हबो फॉल हबो कूल हबो पुणी राइज हबो कूल हबो फॉल हबो पुणी टेम्परेचर बढ़ियो पुणी राइज कूल फॉल बस that would be the reason this cycle is always happening repeating the cycle then everyone है ना तो the cycle is what repeating ये cycle टा कौन होची repeat चलीची बारंबार चलीची this cycle and that is the thermal conductive current which is producing two type of forces that is the what compressional force and tensional force and what tensional force those are the main force of the driving the plate and the plate tectonic then एबे प्लेट टेक्टोनिक आ बुझे असुविधा हबन पड़िला बिकॉज़ तमे फोर्सेस साधारणतः पिला बुझी पारंतु तो फोर्सेस कोन खाली रट्टा मार दो हमें एटा ए जोन सेटा से जोन बट फोर्सेस न जानले कोन हो रट्टा मारी की now here comes to the outer core and inner core है ना ना कोर को मु तुमको कहितली यदि हमें कोर देखिबा द सेकंड वॉल्यूमिनस पार्ट ऑफ द अर्थ है ना हियर भी तो लाइक द बॉल भलिया में हॉट मेटल थे आउटर कोर थे ये तो हमें जानी छे निकल एंड फेरस दैट इज द आयरन केमिकल कंपोजिशन है ना डेंसिटी केते मु तुमको कहितली एठी कहितली 5.5 एठी एठी तुमको लिखाइ छी केते हां एठी लिखाइ छी 5.5 टू 10 बट ये गलत अछि 11.5 होची आर एवरेज डेंसिटी का जाको मीन डेंसिटी हमें को 11.5 आर मैक्सिमम होची केते 13.5 बुझी पारछ नहीं तो ये टिके करेक्ट कर देबो तो हियर वुड बी व्हाट द मीन डेंसिटी रहबो तुमरो 11.5 आर मैक्सिमम डेंसिटी रहबो 13.5 अब जा पड़बनी एंड ओवरऑल डेंसिटी अर्थ रो किते हम कहली स्टार्टिंग रो 5.5 done so that would be the density now why the core is having maximum density because of the nature of the minerals and the elements plus कोन रहबो तमरो enormous pressure अधिक बुझि होछ नै बट जदी तुमको कहबो कि टेम्परेचर आउ डेंसिटी भीतर रिलेशन कोन थे सबले इनवर्स थाए किंतु एठी टेम्परेचर अधिक बट डिस्पाइट द 6000 डिग्री टेम्परेचर बट द डेंसिटी इज मैक्सिमम व्हाई बिकॉज़ ऑफ द प्रेशर बुझि परछन बिकॉज़ ऑफ द व्हाट प्रेशर आउ किछि रीजन नै अदरवाइज एठी डेंसिटी कमी जिवा कथा कना टेम्परेचर बढ़ुछि माने डेंसिटी कमिबो but here density is what increasing because of the pressure done everyone now comes to the inner core ये तो अच्छा हाँ सॉलिड कोट जो हमारा आउटर कोट था लिक्विड रहता है कोर को हम दुई प्रकार भाग करू आउटर एंड इनर आउटर ध्यान से मन को आउटर बुझ परछन आउटर होची लिक्विड मतलब ये जो कोर अछि आको में जदी दी भाग भाग करबा दैट्स एटा आउटर कोर एटा रहबो तुम्हारे इनर आउटर पार्ट ए जो पार्ट रहबो तुम्हारे लिक्विड रेस्ट वुड बी सॉलिड कारण सेटा मेंटल को टच करिछि तो ऑब्वियसली सेठी तो लिक्विड रहइबो ना बुझ परछन एंड हेंस द रेस्ट पार्ट वुड बी व्हाट सॉलिड पार्ट तो जदी प्रिसाइजली देखिबा दैट वुड बी तो प्रिसाइजली देखिबा now comes to the inner core obviously मु तुमको कहतली 13.5 एठी केते लिखाई थी 13.6
ऑब्वियसली मु तुमको आगु कहि देछि मीन डेंसिटी मध्ये कहि देछि कि मीन केते रहइबो मु आउटर इनर कहनी टोटल कोर कथा कहूछि तो टोटल कोर रो एवरेज रहइबो 11.5 मैक्सिमम रहइबो 13.5 द 6 जा तो दैट कुड बी द दे जाना पड़ी जो ना ये सॉलिड स्टेज रे अछि लिक्विड रे नाही कोन पई बिकॉज ऑफ द इनरमोस प्रेशर बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो ये आसी पारु नाही ता बुझा पड़िबो नेबे डन now comes to the discontinuities next is discontinuities next करिबा हम कोन discontinuities तो मैंने ऑनलाइन रो पचारो अरे डरने का कोई बात नहीं पूछ लो ऐसे कभी कभी होता है पढ़ेला बेले तो डिस्टर्ब क्वेश्चन कारण डिस्टर्ब हेले तमरो टाइम ही लॉस मु आलू साडू गपिबी तमरो टाइम लॉस कि ना मु चाहि से हेलो सेई 1.5 घंटाटा सबटु मोस्ट स्टूडेंट हो सर टेम्परेचर रेंज देइछि टेम्परेचर कोन देइछि टेम्परेचर रो रेंज दा देइछि एतरे कोउथिरे देइछि सर ए जो इनर कोर आउटर कोर रे टेम्परेचर रो मेजरमेंट देइछि माने टेम्परेचर रेंज दा देइछि एति केल्विन कि एति डिग्री सेल्सियस सेटा देइछि माने रेंज दा किन प्रेशर सेमति किछि एक्चुअली रेंज देइ नै प्रेशर सेमती मापी हबनी ना सेटा प्रेशर केते प्रेशर अछि सेमती मेजर करि हबनी तो सेटा को जहां भी ये सो हाइपोथेसिस ये जते भी तमरो लेट्स से जदी मु कहूची 13.6 ये जो ये दीज आर ऑल हाइपोथेसिस यार किछि सेमती कंक्रीट एविडेंस ना जहां भी तमे पढुछ वर्तमान इनर अर्थ रो ऑल आर बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस नॉट ऑन एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट और द प्रूफ ये सब हाइपोथेसिस बुझि परछन कारण आपको कहीं भी प्रूफ करि परिबनी आज ऑफ नाउ प्रेजेंट टाइम रो टेक्नोलॉजी को देखि कि मु कहूची फ्यूचर आई हैव नॉट सीन एंड नोबडी हैज सो दैट वर्तमान टाइम रे जदी हम देखिबा नोबडी कैन से प्रेशर भी सेमती तमरो कहि हबो नाही बिकॉज़ दीस आर द अजम्पशन एंड हाइपोथेसिस रे चलची जहा तमे पढुछ now comes to the discontinuities एबे हम देखिबा discontinuities ना डिसकंटिन्यूटीज रा मीनिंग फटाफट मु कहि दोछि सपोज मु एग्जांपल होछि जने गाड़ी चलाउछि 70 स्पीड रे सडनली तार 50 स्पीड को आसेला तो जो जगह रे चेंज हैला सेटला डिसकंटिन्यूटी पुनी से 50 स्पीड रे जाउछि पुनी आसेला 30 को तो सेटला डिसकंटिन्यूटी बुझ परछन दैट मींस डिसकंटिन्यूटी रा मीनिंग हैला सिंपल तमे कहू छ हां मु पढुतली मोर डिसकंटिन्यूटी हे गेला दैट मींस दैट इंटेंसिटी दैट पेशेंस बुझ परछन दैट परसिवरेंस so that you are lacking somewhere सेथिबे तमे कहू छ मोर डिसकंटिन्यूटी हे गेला बुझ परछन तो हियर discontinuity in earth means changes so discontinuity means कोन changes जेमति तमे कहू छ मोर डिसकंटिन्यूटी हे गेला मतलब चेंजेस आसे गेला तमर बुझ परछन so discontinuity रा मीनिंग सिंपल चेंजेस इन द अर्थ तो अर्थ रे कोन चेंजेस देखा जो चेंज इन व्हाट कंपोजिशन चेंज इन व्हाट कंपोजिशन ऑफ द अर्थ जोठी अर्थ रो कंपोजिशन रे चेंजेस हेछि that is called as the discontinuities ना बुझा पड़बनी and that discontinuities सर हेलो सर हां को सर चेंजेस ता कोन हठात हे जियो की रे भाई बोल जो पेशेंस अर्थ रो जो चेंजेस ता आसियो आगे सर सेटा पढ़ी सुनी सर मु पढ़ी साला परे पचारिबो हला सुनी सर मु पढ़ी साला परे पचारिबो जहां भी डाउट अछि सब आंसर दियाबो बुझि परछन ओके सर ना डिसकंटिन्यूटी सुनी दियो कना एमिति बारंबार कोन हो ना ए जिंस मु आगु को पढेबी तमे जहां क्वेश्चन अछि ये पढिला परे अपने आप सॉल्व हे जिवो टेके मु स्टार्टिंग करछि पढै दे तो अपने आप सॉल्व हे जिवो तो डिसकंटिन्यूटी रो मीनिंग कहले मु चेंजेस ना चेंजेस इन व्हाट तो अर्थ रो कोन चेंज हबो अर्थ रो जदी चेंज हबो जेमति मु कहली तमरो कंसंट्रेशन चेंज हे गेला तो अर्थ रो सिंती कोन चेंज हबो अर्थ रो चेंज हबो टेंपरेचर अर्थ कोन हबो टेंपरेचर डेंसिटी प्रेशर अर्थ कोन चेंज हबो ये चेंज हबो तो दैट मींस a zone where temperature density pressure changes and the state of material and the what state of material that zone would be called as the discontinuity now बुझा पड़िबनी simple it's a zone where the temperature density pressure and the state of material will change बुझि परछन that would be discontinuity ना बुझा पड़िबनी
simple. So here what happens comes to the एबे हमें तमरो मु again I will back to this slide. So ये slide को मु आसीची. Here you can see the astronosphere. ये तमरो कोन कोन हेतला astronosphere. Astronosphere केमति अछि सेमी लिक्विड. टेम्परेचर बढ़िबो ना कमिबो बढ़िबो. प्रेशर बढ़िबो ना बढ़िबोनी बढ़िबो. That means जो टेम्परेचर प्रेशर क्रॉस्ड रो थिला क्रॉस्ड रो यार तो अलगा ताले this is a discontinuity. That means ये ला तमरो discontinuity. ना बुझा पड़ेगनी सेमिति नेक्स्ट लेयर को मु जेतोळ आसुची अगेन आर प्रेशर डेंसिटी स्टेट पूरा अलगा ये पुणी गोटे दैट मीन्स ताले डिसकंटिन्यूटी कोठी आसीबो ट्रांजिशन जोन रे ट्रांजिशन जोन बिटवीन द और अमंग द लेयर ट्रांजिशन जोन बिटवीन एंड अमंग द लेयर रे देखा जबो तुमको डिसकंटिन्यूटी कहना गोटे लेयर रु आउ गोटे लेयर को जाउचे वेयर टेंपरेचर डेंसिटी प्रेशर एंड द स्टेट ऑफ मैटर विल सडनली चेंज ना बुझा पड़ोनी ताको में कहबा कोन डिसकंटिन्यूटी देन ना कोन बुझा पड़ोनी है तले एबे तो बुझा पड़ो सिंपल लैंग्वेज रे कहूची किसी डिफिकल्ट यूज करूनी है ना तो सिंपल दैट मींस कहली के डिसकंटिन्यूटी हियर डिसकंटिन्यूटी इंटीरियर अर्थ रो मीनिंग जेतरा हम गोटे लेयर रो आउ गोटे लेयर को जाउचे जो ट्रांजिशन जोन सेठी तुमको चेंजेस देखा जिवो and that changes is what जेमति हम कहली टेम्परेचर डेंसिटी प्रेशर एंड स्टेट ऑफ द मटेरियल ये चेंजेस बुझो एंड दैट इज डिसकंटिन्यूटी तो फॉर एग्जांपल ये रहला तुम्हारा क्रॉस्ड ये रहबा मेंटल त दीटा का डिफरेंस अछि ना ट्रांजिशन जोनटा कोन हबो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूटी हि जबो ताले देखो जोठी जोठी ट्रांजिशन जोन दीज आर द डिसकंटिन्यूटीज ना बुझा पड़बन बस आरो खाली ना गुडा होची फैक्चुअल कांसेप्ट तो हम जानि देले ना तो फैक्चुअल कारण समस्त एट ए टाइम रे के डिस्कवर करनांती दिस आर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बुझि परछनी ये एक्चुअली आगरु थिले एबे जणे साइंटिस्ट बा जणे जियोलॉजिस्ट तो एट ए टाइम सब डिस्कवर करि परिबनी तो सेमन को ना अनुसार दिया जाइते तो फॉर एग्जांपल तमर हैला मोहो डिसकंटिन्यूटी कोन लिखा छै देखा बिटवीन द लोअर crossed and upper mental and kon lower crossed and upper mental that means simple mu तुमको कहबी between the crossed and mental moho crossed and mental जाको मोहराबिक बोली कहा छे है ना that means ये तुम कोन crossed and mental ध्यान से मन को crossed and mental ताको एंते ड्रा कर देबो एटी जेमति ड्रा छी तुम देखि दियो crossed and mental भितर कोन रहबो तुमरो मोहो discontinuity then as well Gutenberg discontinuity between the mental and core between the mental here तुम्हारा core in between रहबो तुम्हारा Gutenberg एटा Gutenberg डिस्कवर करथिले तो ये रहला देन एठी रहबो तुम्हारा मोहो discontinuity तो ये दीटा होची मेजर डिसकंटिन्यूटी ध्यान से मन करो मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या करते क्रॉस्ड एंड मेंटल एंड कोर भीतर के रहला गुटेनबर्ग ए रहला तमरो दीटा प्राइमरी देन आउ तीनटा में सॉफ्ट डिसकंटिन्यूटी देखबा एमन को कहे सॉफ्ट ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटीज और सॉफ्ट डिसकंटिन्यूटीज मध्ये तमे कहि परिबो कारण ए माने गोटिए लेयर रो भीतर देखा जाय ध्यान से देखो सपोज ए रहला तमरो कोर एटा रहला टोटल टा कोर को पुनी में दी भागर भाग करछि इनर कोर आउ आउटर कोर ता मझरे भी गोटे ताले डिसकंटिन्यूटी देखा जबो ताले एटा कोन विद इन द लेयर दैट इज द लेमैन डिसकंटिन्यूटी ए लेमैन डिसकंटिन्यूटी दैट मींस कोन कि ए इनर कोर एंड आउटर कोर मझरे रहला लेमैन बुझि पाला है ना देन एज पर रेपिटी का करे इनर मेंटल आउटर मेंटल बस ताई बुझा पड़िबनी देन एज पर तुमर कोन कॉन्ट्राड आसीबो क्रॉस्ड अपर क्रॉस्ड लोअर क्रॉस्ड खत्म सो दीज आर द डिसकंटिन्यूटीज आप बस आराम से ही तुमरो किछि इतरे नहीं बुझ बस खाली डिसकंटिन्यूटी कोन जानि लो कोन पई होउची नाउ व्हाई डिसकंटिन्यूटी एबे डिसकंटिन्यूटीज एथि पई होउची जोटा मु तुमको कहितली कि देखो प्रेशर एथि पई बढ़ुची कारण ऑब्वियसली जेतले या पर माउंटेन अछि तो आ पर प्रेशर पड़िबो ना तो जेतले हम तळको जो प्रेशर तो पड़िबो ओवरलाइंग रॉक पर प्रेशर गोटे अछि कि नै प्रेशर पुट करो अब प्रेशर पड़िले टेंपरेचर कंपोजिशन सब चेंज हिजो कोन पई देखो प्रथम कथा मोर द प्रेशर जदि प्रेशर बढ़ुची ताले टेंपरेचर बढ़िबो हा कि नै
टेम्परेचर बढ़िबो ना टेम्परेचर बढ़िले कंपोजिशन चेंज हो जिवो कोनोसी गोटे जिंसर कंपोजिशन चेंज हो जिवो टेम्परेचर बढ़िले सेति पे सब चेंजेस है ना बुझा पड़नी तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़िले टेम्परेचर बढ़िबो टेम्परेचर बढ़िले कंपोजिशन चेंज हो जिवो and that is why the composition will have different sort of composition in the inner earth है ना प्राइमरी ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ନାଁ ଦିଆଯାଇନି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେମନ ରେପିଟି କନରାଡ ଆଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଅଲ୍ ଆର୍ ଦ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟିଜ୍ ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ସବ୍ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟିଜ୍ ଦ ମେଜର ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇୟର ମୋହୋ ଆଣ୍ଡ ଗୁଟେନବର୍ଗ ଏମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅର୍ ମେଜର ଏମାନେ ସବ୍ରେ ଆସନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ୱିଦିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେୟାର बट एमाने कौन बिटवीन ना बुझिपारन एमाने बिटवीन जो मोहोटा रहिला एंड गुटेनबर्ग दे आर बिटवीन द लेयर और से माने विदिन द लेयर डिफरेंस बुझ परछ तो से माने विदिन द लेयर ना कम्स टू द एबे हम देखिबा वेव्स ना एबे हम देखिबा एक्सप्लोरिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ये तमरो इंटीरियर अर्थ को तमे जानिलो हाउ योर इंटीरियर अर्थ लुक्स लाइक ना कम्स टू द हमें बेसिक वेव्स हमें थिके देखि देबा relief wave RALYLEIGH relief wave चारिटा waves अच्छी गोटे हला P waves और primary waves P waves और primary waves आपको मु कहि देबी है ना secondary S for तमरो secondary L for love R for relief चारटा वेव्स अच्छी साधारणतः एनसीईआरटी रे तुमको तीनटा देखा जाए 3 वेव्स तुमको लिखा थो एनसीईआरटी रे बट देयर आर 4 वेव्स है ना देयर आर व्हाट 4 वेव्स इन द अर्थ केतरा में देखबा एबे वेव्स बट वेव्स को जीवा पूर्व गोटे कांसेप्ट तुमको कहि दिए कि कांसेप्ट कोन अच्छा एबे मते को जो मु डिसकंटिन्यूटी कहितली कहार डाउट अछि को जो मैंने ऑनलाइन अच्छो ये डाउट पचार जहाँ आम पढ़ी सारे अप टू दिस फ्रॉम हियर जहाँ तुम स्ट्रक्चर आम पढ़ीचे जार डाउट अच्छे मत पचार दियो सो दैट आई विल मूव अहेड एनीवन करबी ओके डन तो आम देखा अर्थक्वेक ना आम फास्ट मुझे तुमको अर्थक्वेक कहबी तापर अर्थक्वेक वेव्स को आसबी सो दैट तुम लिंकिंग हो पार तो फास्ट आम देखा अर्थक्वेक ना अर्थक्वेक जदि आम देखा अर्थक्वेक कौन अर्थक्वेक हूँ सिंपल सेकिंग ऑफ द ग्राउंड सिंपल सेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड इज अर्थक्वेक अर्थक्वेक रो डेफिनेशन होची सेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड shaking and trembling of the ground is called earthquake due to the endogenetic or exogenetic or exogenetic लेखनी anthropogenic factors एंडोजेनेटिक जो लिखी ना से फोर्स लिखी दिए से साइड रे फोर्स लिखी दियो और anthropogenic factors है ना तो ये होची earthquake रो डेफिनेशन ना earthquake दैट मींस हमें देखले तार कॉजेस को मुझे जीबी एबे कॉजेस टा लिखि दे earthquake रो भी अच्छा सिंपल डेफिनेशन हो गली सेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सर एंथ्रोपोलॉजी रे माइनिंग छड़ के कोन एग्जांपल अछि के कहबे कहबी पूरा टॉपिक खत्म कर देबी जहां क्वेश्चन अछि पचारिबे मोस्ट वेलकम है ठीक है जी जस्ट पेशेंस रख है ना कजेस को आसवा ना कजेस प्रथम नेचुरल कजेस लिख नेचुरल कजेस ऑफ द अर्थक्वेक नेचुरल कजेस ऑफ द अर्थक्वेक फास्ट नेचुरल कजेस किछि भी छाड़ीबिनी बुझि पछ नहीं डोंट वरी तो फास्ट हमें नेचुरल कजेस रे हेबो तमरो फास्ट तमर नेचुरल कजेस होछि वोल्केनिक eruption then as for plate movement then as for meteorite fall
मेट्यूरेट फॉल ये भी हो परिबो है ना लैंडस्लाइड वोल्केनिक एरप्शन लिखिछ ठीक ताले तमरो volcanic eruption plate movement meteorite fall landslide so these are the natural causes of earthquake then anthropogenic रे लिखुछ ना तमने जो ऑनलाइन रे छ फटाफट लिखियो ठीक है Yes, sir. anthropogenic रे yes sir yes फायर sir फायर माइनिंग डैम कंस्ट्रक्शन anthropogenic रे डैम कंस्ट्रक्शन फायर फायर पहले अंडरग्राउंड फायर है ना देन तमरो माइनिंग डैम the nuclear test or nuke test underground nuke test collapsing building collapsing बड़ बड़ बिल्डिंग जितने पड़िबो तो ट्रेवलिंग सेटिंग तो हबो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड and other developmental activities other massive developmental activities लिख लेता other massive developmental activities सपोज तुम बहुत गोटे पहाड़ को डायनामाइट रे फटौछ तो कौन हबो अर्थक्वेक देखा जिवो जेंति एबे शिखर चंडी पहाड़ को तार प्रोजेक्ट बुझि परछन किछि काम ने मजबूती कंटिन्यू हेला तो ऑब्वियसली से पहाड़ को ताकू करिया कोन दरकार से तो तमर कोन खेती करछ मूविंग पर हां अरे से तो पास से तार अछि ए तार आराम से तार पहाड़ अछि ए तार गछ पत्र अछि जेति गोटे इकोसिस्टम देखा जति बहुत सारा लोक जाई टाइम पास करूछंती लोक के एटलीस्ट फ्री टाइम तो खाली से पटियाटा तो नले मिनी बॉम्बे तो पटिया का सेटा तो शुद्ध मिनी बॉम्बे बुझबोतन है ना ताकू भी से तो केस कीट इंटरनेशनल जो हेछि ते पहाड़टा को डिसमेंटल करी हेछि पूरा सेठी गोटे पहाड़ थिला छोटिया पहाड़ बुझबोतन ये पूरा आपको कोनी भांगे अपने बस सही तो न पाओ के बुझबोतन अंडरग्राउंड फायर हेले तो गोटे गैप क्रिएट हबनी भाबो पेट्रोल गोटे तम गोटे जगह पेट्रोल रखिछ से फॉर एग्जांपल कोल भाबो गोटे जगह कोल माइन अछि आ सिटी फायर लाइक देछि से कोल सो पोडी दिबो तो गैप क्रिएट हबो कोलैप्स करी गेले कोन दिबो बट ध्यान से रखो जो तमरो एंथ्रोपोजेनिक माने माइनर अर्थक्वेक करिवो मेजर एटा ध्यान रखिबे जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस रे माइनर अर्थक्वेक हबो मेजर हबनी बट नेचुरल कॉजेस रे मेजर अर्थक्वेक हबो अच्छा तमे सुनिथबो केउझरे बहुत सारा घर अछि जो उतरे क्रैक देखा जाउछि जेमति कि जोड़ा बडबिल एरिया जो बहुत सारा घर अछि जोटी क्रैक घर सब कांथ फाटी जाउछि कोन पई तळे माइनिंग करके सबु ये कर देले बुझि परतनी सो सर दैट इज व्हाई जोशी मठ भलिया होउची जोशीमठ सेटा लैंड सबसाइड करूछि आज्ञा सेटा सबसाइड करूछि किंतु एटा होछि तमरो कोन एठी क्रैक डेवलप करूछि है ना तो ये तमको ओके सर ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାଇନିଂ କଲା ପରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଫିଲିଂ କରାଯାଏ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲିଂ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ନ हो ଆଉ ଯେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲିଂ ଏମାନେ କି କାହିଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲିଂ କରିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାଇନର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସ ବ୍ଲାକ୍ ଜାଣିଛ ବ୍ଲାକ୍ ମାଇନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ସପୋଜ ତମେ 100 ସ୍କ୍ୱାର ଫିଟରେ କ'ଣ କରିବ ମିନେରାଲ୍ସକୁ କାଢ଼ିବ ସେ ଭିତରେ 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 ଖୋଳି 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 ପଳେଇଥିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲିଂ ତ କରିବେନି କାରଣ ତା ପାଇଁ ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି କି ନାହିଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲିଂ ପାଇଁ ତ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲିଂ କଲେନି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସଫର ହେଲେ ଶୁଣି ଭେହିକଲ କୁ ନିଆ ହବନି ଛୋଟିଆ ଏଇଟା वाईफाई नहीं कि देखिए ठीक है ना
ହଉ ତମେ ଲେଖୁଛ ତାହେଲେ that means first ଆମେ କହିଲେ anthropogenic causes ର ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି and there will be like the mining ତ ତମକୁ କହିଲି ତ କେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବ let's say ଆମେ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି କ'ଣ କରୁଛୁ ଡାଇନାମିକ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଆଚ୍ଛା ଆୱାଜ ଆସୁଛି ନା ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଅଛ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଦେଖାଯିବ ହେଲା ହଁ ସାର୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. so these would be what I mean causes କହିବା causes of the earthquake ना but earthquake ର causes ତ ଜାଣିଗଲ but ଯଦି ଆମେ earthquake ର distribution କରିବା then ଆମେ କହିବା earthquake ର distribution of earthquake causes ଦେଖିଲେ ଆମେ earthquake କ'ଣ causes and distribution of the earthquake ର distribution କୁ ଦେଖିବା distribution ରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ତମେ distribution ରେ ଯଦି ଦେଖିବ case 70 to 75% of the earthquake 70 to 75% of the earthquake rings of fire देखा जाए in the rings of fire 70 to 75% of the earthquake that happens in the rings of fire in the what rings of fire रे आसीबो then almost 20% देखा जाबो intercontinental 20% तुमको देखा जाबो intercontinental कहले कोठु कोठे देखा जाबो तुमको देखा जाबो सेटा from Alps to Himalayan range रे तुमको से 20% देखा जाबो है ना that would be 20% एक मिनट टिके जो मैंने ऑनलाइन रो टिके पेशेंस रखो टिके मु खाली कनेक्ट करोची बट हैंग ही जाउछ नहीं तो फास्ट दैट मीन्स हमें एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस रे देखिले तो ये तुमको एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस को बुझे परिबो है ना अच्छा डैम जदी तुमको कहजो कोयना डैम कोठी अछि महाराष्ट्र ना मो एंथ्रोपोजेनिक रो कॉजेस देउची मतलब अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कोथले ना 70 to 75% कोठी देखा जाबो तुमको रिंग्स ऑफ फायर कहले सराउंडिंग द पैसिफिक ओशन सिंपल हमें रिंग्स ऑफ फायर रो मीनिंग होची सराउंडिंग द पैसिफिक ओशन जेहेतु सर्कुलर इन नेचर सेठी ताको कहते रिंग्स ऑफ फायर प्रथम कथा रिंग्स ऑफ फायर काहे सुन रिंग रो अर्थात सर्कुलर आ पैसिफिक ओशन केमती फॉर्म रे अछि सर्कुलर फॉर्म रे ना फायर अर्थात होची वोल्केनोस फायर रो मीनिंग होची वोल्केनोस सेथमे ताको कहते रिंग्स ऑफ फायर एबे बुझी पाइबो बेसिक जिंस कि पैसिफिक ओशन रो शेप ता था राउंड ता चारि पटे वोल्केनोस अछि तके ताको कहते रिंग्स ऑफ फायर and that accounts itself almost 70% of the total that means what earthquake and volcanoes as well and volcanoes कुछ वर्ष नहीं तो भावो तो 70% गला देन आई सपोज 20% रहिबो तमरो इंटरकॉन्टिनेंटल कहले बीटा कॉन्टिनेंट रे मछरे कोटो एल्प्स टू नहीं कि पूरा म्यांमार से कहले एटा इंटरकॉन्टिनेंटल ये रहिबो तमरो जो थे कि टर्की इंडिया अरब इटली ए ग्रीस ग्रीस सब आसुच बुझ परछन सो दैट वन पूरा एल्प्स सिंपल तमे देखि देबो फ्रॉम एल्प्स टू हिमालय है ना एल्प्स टू हिमालय ये रहबो तमरो 20% ताले हेला कते 90% और रहला 10% हियर एंड देयर 10% जो रहला हियर एंड देयर कारण से 10% जेमती तमरो कोठी डैम रे गोटे अर्थक्वेक आसी गला छोटिया मोटिया बुझ परछन हियर एंड देयर दैट वुड बी देयर कोठी गोटे हॉटस्पॉट आसी गला ता द्वारा तुमको देखा जबो है ना ये रहबो तमरो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक एथरे किछि डाउट अछि जो माने ऑनलाइन रो अछि को अच्छा तमन को आवाज आछि ना जो माने ऑनलाइन रो आवाज आछि
है ना ताले एबे बुझी परिबो देन अर्थक्वेक रो डिस्ट्रीब्यूशन तुमको कहि देली एबे आसीबा हमें ताले जो कोइना अछि तमरो ये जो कोयना डैम कोठी अछि महाराष्ट्र एठी को प्रकार डैम द्वारा डैम जो कोयना डैम फॉर्मेशन हला ता द्वारा अर्थक्वेक हेइथला दैट मींस एटा कोन हाइड्रोलिक अर्थक्वेक आको कोन कहै जो हाइड्रोलिक अर्थक्वेक अर्थात हाइड्रोलिक प्रेशर जोगु अर्थक्वेक हेइछि जेते बड़ा ह्यूज डैम हला ता द्वारा वाटर सेठी रहिला वाटर गोटे प्रेशर पुट करिवो जाको हाइड्रोलिक प्रेशर कहा जाय एंड दैट इज व्हाई अर्थक्वेक कॉज तनो एमथि तुम पचरबो कि where in India where the hydraulic caused earthquake has happened or took place that is the कोयना है ना तो ये जो तुम्हारा कोयना रहिबो कोयना डैम महाराष्ट्र रे हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा हेइ पारे और इटसेल्फ ए एंथ्रोपोजेनिक तभी तुम्हारा न्यूक्लियर टेस्ट हे गेला किछि भी हेला बुझबोछन दैट विल लीड टू द व्हाट earthquake mining हे गेला अंडरग्राउंड फायर हे गेला तो दीज आर द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस ना नेचुरल कॉजेस तुम ऑलरेडी जानि परिबो है ना तो ये रहा तुम अर्थक्वेक ना अर्थक्वेक तुम डेफिनेशन देखले कॉजेस देखले इंपैक्ट तो तुम जानि छ तो कहै पड़िबनी इंपैक्ट को तुम केमती डिवाइड करिवो गोटेला तुमरो कोन एनवायरमेंटल इंपैक्ट गोटेला एमती ताको डिवाइड करिवो गोटेला सोशल इंपैक्ट गोटेला इकोनॉमिकल इंपैक्ट बस एमती डिवाइड करिवो ताको डिवाइड कर दबो हला इंपैक्ट को एनवायरमेंटल इंपैक्ट सोशल इंपैक्ट एंड इकोनॉमिकल इंपैक्ट बुझी पारछन तो आपको एमती डिवाइड करिकि तापर तुम ताको इंपैक्ट को लिखिबो एनवायरमेंट रे कोन हबो CO2 रो प्रोडक्शन बढ़िबो ह कि नहीं GHG टा कोन बढ़िबो कारण वोल्केनिक इरप्शन हेले एसो गैसेस प्रोड्यूस हबो तो एटमॉस्फेरिक दैट मींस हम केबा GHG CO2 ए सब तमरो आसी गला सिंपल GHG लिखि दियो ये तले एनवायरमेंट कॉज जिवो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हबो कि नहीं जेटी वोल्केनिक इरप्शन रो नियर बाय रे लोक मर जिवो गछ पत्र मरि जिवो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जिवो बुझा पड़ो कि नहीं ताले वाटर रे मध्ये भाबो वाटर पीएच भी चेंज हो जिवो तुरंत कहने से नेचुरल जेको वाटर पहुंचबो वाटर इकोसिस्टम को खत्म करिवो एनवायरमेंटल को एयर को खत्म करिवो एंड नेचुरल फ्लोरा फॉना को मध्ये से खत्म करिवो ना बुझा पड़िबो नै सिंपल तो दैट मींस दैट विल डैमेज तले हम कहबा बायोलॉजिकल लाइफ एज वेल तो से वाटर हेई परे एयर हेई परे और ऑन द सरफेस हेई परे तीनीटा को इंपैक्ट करिवो on the top of that ये कौन फॉर्मेशन करिवो आर्टिफिशियल क्लाउड फॉर्मेशन करिवो जो गैसेस इजेक्ट हबो ना जो गैसेस दे विल फॉर्म ए क्लाउड माने क्लाउड फॉर्मेशन करके कौन करिवो कूलिंग इफेक्ट देखिबो ध्यान से देखो दे विल इजेक्ट द गैसेस दैट विल टर्न इनटू ए क्लाउड and that cloud will effect have what obviously cooling effect on that particular region then cooling effect तुमको देखा जिवो ठीक अछि एनवायरमेंटल इंपैक्ट देखिलो तमरो एसिडिटी बढ़ी जो वाटर रो एटमॉस्फेयर रे तमरो पॉइजन गैसेस आसी जो लोक मरिबे गछ पत्र तमरो फोटोसिंथेसिस हेई परिबन तापर गोटे डस्ट लेयर बसी जिवो फोटोसिंथेसिस हेई परिबन तो से सब मर जो बरीड हेई जिवो बहुत सारा पत्ती जिवो बुझो दैट कुड बी आउ कोन हबो चैनल जो तमरो थाए देखो एथरे बहुत अछि बट प्रीलिम रे एते जिंस थई हबो चैनल पूरा डाइवर्ट हेई जिवो सपोज गोटे तार रिवर जाउची तो ता पाथ भी डाइवर्ट हेई जिवो माने से मटेरियल आसी तार पाथ को डाइवर्ट कर दो नले ब्लॉकेज करके लेक फॉर्मेशन भी कर दे पारे बहुत सारा इफेक्ट तुमको देखा जो नाउ कम्स टू द सोशल पार्ट ये तमरो हबो एनवायरमेंटल पार्ट बुझि परबो क्लाउड फॉर्मेशन हबो इवन को आजे माउंट क्राकाटुआ जोटा 1883 रे इरप्ट करथियो माउंट क्राकाटुआ इंडोनेशिया ये आपको सब मोस्ट डेंजरस वोल्केनो इन द ईस्ट पूरा हमर ईस्ट जे ईस्टर्न हेमिस्फीयर देखिबा तो मोस्ट डेंजरस वोल्केनो होची माउंट क्राकाटुआ इंडोनेशिया जाकार्ता पाखरे अछि क्राकोटा है ना ये सबठु डेंजरस वोल्केनो क्राकाटुआ बुझिबो इंडोनेशिया ये 1883 रे एरप्ट करथला जोथरे 10000 लोक मरथिले बुझिबो और ये आर जो क्लाउड फॉर्मेशन करथला दैट वाज एक्जिस्टेड फॉर द ईयर माने 10 वर्ष पूरे इवन कोदे एबे भी मतलब कोदे के एबे भी इंपैक्ट करो तो इक्वली इंपैक्ट करतो पूरा क्लाउड फॉर्मेशन करिकि कोन करो से क्लाउड कारण ये पूरा इजेक्ट करिवो ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस ना बुझा पड़बनी आउ कोन करबो पायरोक्लास्टिक मटेरियल PYROCLASS पायरोक्लास्टिक प्लास्टिक नो क्लास CLA पायरोक्लास्टिक मटेरियल ये कौन इजेक्ट करिवो पायरोक्लास्टिक मटेरियल
जेतरो वोल्केनिक एरप्शन हुए पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स विल इजेक्टेड सिंपल पायरोक्लास्टिक मटेरियल होची गुटे होलिस्टिक वर्ड कहले ऑल मटेरियल इजेक्टेड थ्रू द वोल्केनो कौनसी मटेरियल जदि वोल्केनो द्वारा इजेक्ट होची दैट वुड बी कॉल्ड एज द पायरोक्लास्टिक मटेरियल ना बुझा पड़बनी एनीथिंग कहीं से वोल्केनिक बॉम्ब ही पड़े दैट कुड बी डस्ट ही पड़े दैट कुड बी पेबल्स कोबल बोल्ड बॉम्ब भी कहुचे बॉम्ब कहुचे वोल्केनिक बॉम्ब बॉम्ब रो अर्थात कोन कहलो बड़ बड़ बोल्डर से सब भी बाहर ब्लास्ट होई कि से को कहुचे वोल्केनिक बॉम्ब बुझा पड़बनी तो ऑल दीज आर पुट टुगेदर टू कॉल्ड एज अ पायरोक्लास्टिक मटेरियल तो ये भी मध्य तुम इंपैक्ट पूरा घर फर गुड़ा पोती जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल हाँ कि नहीं नाउ सोशल इंपैक्ट कौन हम कि सोशल इंपैक्ट लोक को मेंटल ट्रॉमा दब से कौन देव मेंटल ट्रॉमा हाँ कि नहीं आज पर्यटन लोक भूली पार्टी फानी कथा ना सुपर साइक्लोन कथा भूली पार्टी मतलब शुणिले डर आसूची तो दैट इज द मेंटल ट्रॉमा दैट इज व्हाट मेंटल ट्रॉमा बुझिपारछन आउ से कौन हम ना सोशल इंपैक्ट रे आउ कौन देखा माइग्रेशन देखा से लोक छाड़ी पलैबे से आगे माइग्रेशन देखा मालन्यूट्रिशन डिजीजेस ये सब देखा कि नहीं डिजीजेस आसो जहाँ रोग तो हम ही हम ये जो गैसेस आसला ये सब कार लंग्स प्रॉब्लम कार आस्थमा प्रॉब्लम ये सब आसो तुरंत डिजीजेस देखा माइग्रेशन देखा मालन्यूट्रिशन देखा पोवर्टी देखा दिस वुड बी द सोशल इंपैक्ट ऑफ द नेचुरल अर्थक्वेक देन कम्स टू द इकोनॉमिक रे तो जानिछ तुम रास्ता घाट डैम सब खत्म इलेक्ट्रिसिटी नहीं रोड नहीं डैम भांगी जाइछि गैस पाइप तार गैस आसुनी दिस वुड बी द इकोनॉमिक तापर ओवरऑल जीडीपी लॉस हो देशर हां कि नहीं तो दिस वुड बी द इकोनॉमिकल इंपैक्ट ऑफ द तुमरो अर्थक्वेक इन द वोल्केनोस ये रहबो देन केरला में अर्थक्वेक रो कॉजेस देखले इंपैक्ट देखले ना आमे देखिबा अर्थक्वेक्स द्वारा कौन हुए सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस हुए ताद्वारा कौन प्रोड्यूस हुए सिस्मिक वेव्स एबे बुझा पड़बो ना इंटरनेट नॉट बुझा पड़ुचे हमें ना कम्स टू द सिस्मिक वेव्स को हमें आसीबा प्रथम कथा वेव्स कौन ना देखो वेव्स होची फॉर्म ऑफ एनर्जी ये गोटे फॉर्म ऑफ व्हाट एनर्जी है ना ये गोटे जेमते कि तमर विंड एटा गोटे कौन फॉर्म ऑफ एनर्जी बुझि परछ wind energy transform into the waves energy हमें वाटर रे कौन देखु जेमती एमती लहड़ी आसुची these are what simple wind energy is transformed into the wave energy into the waves खाली एनर्जी रो ट्रांसफॉर्म होची बुझि परछन सो these are the waves हां कि नहीं now here comes to the जेतरा में seismic waves कथा कहूचे that means the energy that is released by the conserved earth तो सिंपल कौन थाए मुआर सब बेस्ट एग्जांपल दिए तुम बाइक चलाउछ कि जेतरा पुओ पिला तो बाइक चलवा एक्सीडेंट होबो तो डाउट नहीं हाथ भांगिबो कि गोड़ भांगिबो बहुत पेन हुए हाँ कि नहीं तादर कौन पे पेन होची कारण जो बोन रे जो एनर्जी थिला से रिलीज हे गला बुझि परछन बिकॉज़ ऑफ द क्रैक डेवलप जेतरा क्रैक डेवलप से कहते नहीं एते पेन नहले होपन बहुत जो पेन होचे हाड़ भांगिते नहले नहीं तो काहे बिकॉज़ दैट कंजर्व एनर्जी इन द बोन दैट विल रिलीज देयर और से पॉइंट रिलीज हो पेन करेगा ये भी सेमिति जेतले रॉक रो कंजर्व्ड एनर्जी रिलीज हुए दैट एनर्जी विल टर्न इनटू द वेव्स ना बुझा पड़ोनी दैट एनर्जी विल टर्न इनटू द वेव्स जो कंजर्व्ड एनर्जी थाए दैट विल टर्न इनटू द वेव्स ना बुझा पड़ोनी ना रॉक रो गोटे अछि रॉक पखरे कोन थाए शियर स्ट्रेंथ थाए कोन थाए रॉक पखरे शियर स्ट्रेंथ हां कि नहीं शियर स्ट्रेंथ थाए भाना ଆଉ ସିୟର ଫୋର୍ସ ତ ଜାଣିଛ କହି କହିକି ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ପତା ନାହିଁ ତମ ମାନେ ମନେ ରଖିଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଅର୍ଥ କାହିଁକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହୁଏ ବିକଜ ଅଫ ଦ when shear force exceeds the shear strength ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏବେ ଦେଖିବ दैट मीन्स जो तुमର ରକ୍ ଗୋଟେ ଭାବ ये ଗୋଟେ ରକ୍ ये କ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେବ ये କ୍ରାକ୍ ହେବ କ୍ରାକ୍ ହେଲା ପରେ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ ହେବ that energy will turn into the waves जाको कहबा seismic waves डानेबे बुझिबा seismic waves हला now that waves को हमें कोन करबे चारि प्रकार गोटे हला p waves s wave l waves r waves or the relief wave R A Y अच्छा ये तो लिखी होनी R A Y L E I G H relief wave चारिटा waves अच्छी P for primary or compressional S for secondary
S stands for secondary and the shear force, and the L stands for the surface or the log, or it could be log. Now comes to the R, that is the relic. So these are the four waves. ये सब waves केमिति होची because of one factor, that is the energy of the rock, which was shear strain, that is now the rock equal to energy release होतला से convert these wave कोथरे हाँ एटा ही तुमको भल मन पड़िबो बुझि पछनी आउ किछि ताको पचारे पड़लानी से एटा ही पचारला काई मु एटा लिखिली बुझि पछनी हाँ ये सब देन आसबो तुमर आर वेव बा रिलीफ वेव ध्यान से देखो पी बा कंप्रेशनल एला शियर्स एला लव सो टू मोस्ट डेंजरस होची आर ध्यान से मनको द मोस्ट डेंजरस होची आर वेव्स ए तुमको पता रखो हु इज द फॉलोइंग द मोस्ट डेंजरस एला आर हैला आर केमती मूव करेबे सुनो एस आउ तुमरो ई मान को कहे कंप्रेशनल ए जो तुमरो एल आउ अच्छा सुनो ये जो आर टार मूवमेंट है मैं कहबी पी केमती हैला पी लाइक ए साउंड वेव्स ये कौन कहे लाइक ए साउंड है ना साउंड जेमती सॉलिड रे जाई परबो लिक्विड रे जाई परबो आउ मतलब कोन गैसेस रे जाई परबो ये भी सेमिति तो ये जो पी वेव्स ए सॉलिड रे जाई परबो लिक्विड रे जाई परबो और गैस तो नहीं अर्थ रो त मु कोड लिखिबी अर्थ रे तो सॉलिड लिक्विड गैस तो नहीं गैस रहले केमती फॉर्म पावर हबो हबनी तो गला पी वेव्स लाइक ए लाइट वेव्स केवल ए सॉलिड रे जाई परिबो लिक्विड रे जाई परिबो नाही ओनली इट कैन प्रोपागेट थ्रू द सॉलिड मीडियम है ना ना एल वेव्स होची सरफेस फेनोमेना एक केवल सरफेस रे थाए केवल सरफेस इट इज लाइक व्हाट दैट इज द पी वेव्स बोलिया ये मध्य पी वेव्स बोलिया सिमिलर टू पी वेव्स सिमिलर टू पी वेव्स कंप्रेशनल इफेक्ट देखिबो ये भी तमरो कंप्रेशनल इफेक्ट देखिबो है ना ना आर केमती रोटेट आर ध्यान से मको एक क्वेश्चन पचरे आर इज लाइक ए वेव्स ऑफ द ओशन वेव्स ऑफ द ओशन ओशन रो वेव्स जेंती मूव करे ए सेमिति मूव करे केमिति रे ओशन मूव करे ओशन रो वेव गुडा एमिति एमिति मूव करे हां कि नहीं आमको देखा जाए केमती एमिति मूव करूचे ना से सर्कल रे मूव करे सर्कल सर्कल गोटे सर्कल आउ गोटे सर्कल को पुश करे सो दैट से जाए मूव करे आमको देखाउची एमिति एमिति जाउटी बट ना से एमिति जाउ से सर्कल सर्कल हेकी जाउची पुश करूची आउ गोटे के सब मूव करूची नाउ दिस आर वेव आल्सो मूविंग सेम एमिति सर्कल सर्कल हेकी जिवो सथि पई ए बहुत डेंजरस काना पूरा लैंड के सर्कुलर घुमाइबो बुझि परछन पूरा बिल्डिंग को गोटे सेकंड रो कोलैप्स कर दबो से एमती पूरा भूलेइबो बुझि परछन ना पूरा घुमाई दो पूरा तो ये डैमेज कर देबो बट पी टा केमती डायरेक्ट मूव करबो एमती मूव करबो तो ये कंप्रेस करबो स्ट्रेच बैक पी वेव्स केमती मूव करबो एमती मूव स्ट्रेच करबो पुरा बैक करबो बुझि परछन ये पी करबो सेटमे बेसी डैमेज करे बुझि परछन एस टा किंतु अप एंड डाउन है कि मूव करबो एस टा बुझि परछन किंतु ये सर्कुलर रे जीवन ध्यान से मको ये सर्कुलर रे जीवन एस टा तो एस केमती मूव करे तो एमिति एमती मूव करियो बट मु कहली वेव बोलिया नो तुमको लागो वेव बट एटा वेव नो एति तार लॉन्गिट्यूडनल है कि तार आराम से मूव करूची है ना तो ये कौन करे एस वेव जो ये शियर ये कौन करबो साइड को इंपैक्ट पकाए माने आरंभ कहूची एस वेव जेते एमती प्रोपागेट करूची एटा तार डायरेक्शन जो मटेरियल तो साइड गुडा परपेंडिकुलर को स्ट्राइक करिवो माने जो मटेरियल इस साइड अछि कि नहीं दे वुड बी सेकिंग लाइक दिस परपेंडिकुलर टू द वेव एला तमरो एस वेव परपेंडिकुलर किंतु आर रे कोन रोल करैबो सिंपल मन रखि दियो रोलिंग ये रोल करैबो ये कोन करबो रोल लाइक द वेव्स ऑफ द ओशन अब एटा ही पचारे कारण मैक्सिमम पिला एटा पढांती ना आर वेव बहुत कम लोग पढांती पिला भी बहुत कम पढ अच्छा तुमी से एटा पचारे बुझिबो कारण एनसीईआरटी रे नाही बुझिबो एनसीईआरटी तमर तीनटा अछि तणु से आर वेव ही पचारिबो ना ये हला प्राइमरी पी फॉर प्राइमरी एस फॉर सेकेंडरी ये तमरो चारटा वेव्स कथा कहली ए चारटा वेव्स मन रखिबो बुझिबो मोस्ट डेंजरस तापर कि एल सबटु लीस्ट होची पी सबटु लीस्ट डेंजरस होची पी सबटु मोस्ट होची आर फॉलोड बाय एल होची सेकंड मोस्ट डेंजरस ता ना किंतु लॉ बट से बुझि परथो है ना
देन आमे देखबा ये तमे देखि दियो एबे एलटा मूव करिवो पर आर एल एल कथा कहउछो ए साइड बाय साइड माने साइड को भी मूव करिवो आगो को भी चलिवो जेंति सापोटा केंति साइड साइड हे कि पुनी आगो को चले साइड को मूव करे तापर से बेंडिंग पार्ट रो सापो केंति मूव करे देखि छ एस बार सिंपल सापो मन रखियो हैला ये सेमति साइड को जिवो आगो को चलिवो बुझि परछन सिंपल लाइक ए स्नेक और जेते शॉर्टकट पढ़बे पिलांकर मन रहिबो बुझि परछन शॉर्टकट किछि नहले ते बुकिश लैंग्वेज रे पढ़िले मन रहिबेनी विमोहित को जे लॉक होछि साप फिर जीवे आज माने कोन कोटा किंग कोबरा ना तमरो ये रसल भाइपर ना এটা নিউরো পয়জন দেব না লক কোন করে নিউরন কে করে মেন্টালি করে বসে अच्छी এটা রসেল ভাইপার হবনি এটা হবো না নিউরো পয়জন কিয়ে দিয়ে যেতে তোমার सर को কোবরা স্পিসিস ଅଛି এসবু নিউরোটক্সিন দিয়ে বুঝিছো আর রসেল ভাইপার কোন দিয়ে কেমন ভেরি গুড তো সেটি সে গোটে মসল को পচেই দেব পুরা পচি আসিব বুঝি পড়ছেন ଆଉ ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ତ ବ୍ଲଡ ଟା ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଇଯିବ ବ୍ଲଡ ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଇଯିବ ଅକ୍ସିଜେନ ପହଞ୍ଚିବ ନା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ ମରିଯିବ ବୁଝି ପଡୁଛି ଯାହା ବି ହଉ ତ ଇଏ ତମେ ଦେଖିଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଏ ମୁଭ୍ କରିପାରିବ ସଲିଡ୍ ର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ର ଗ୍ୟାସ୍ ତ ନାହିଁ ଏ ହେଇଗଲା ଏ ଲାଇକ୍ ଏ ଲାଇଟ୍ ୱେଭ୍ସ ଅଲରେଡି କହିଦେଇଛି ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ସ ଅଲରେଡି କହିଦେଇଛି ଏ ସଲିଡ୍ ଦେଇକି ଯିବ ଏଲ୍ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଜେନରାଲି ଆଫେକ୍ଟ ଓନଲି ଦ ସରଫେସ୍ ଅଫ ଦ ଅର୍ଥ କହିଦେଇଛି ତମକୁ ସେସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ସ ଦେ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ବଟ୍ ଇଏ ନୁହଁ ସବୁଠୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ହେଉଛି ଆର୍ଥ ହେଲା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ କାରଣ ତାର କାରଣ କଣ କାରଣ ସେ ରୋଲିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖେଇବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ आरटा नहीं ना हियर कन्सिडर मूवमेंट तो काली मु तुमको ये मानकर मूवमेंट देखेबी आपको ये फिगर टाको काली पढ़ाई देबी ए फिगर आउ कोन अछि देखि दिए टिके बस एटा ही अछि स्लेट रे अच्छा टिके पढ़ाई दउछि तल काई रखिबे एति कहि दउछि केते हिज टाइम गोटे जिंस आगे से देखि दियो तम माने समस्ते किछ ना किछ साइंस पढिछो लेट्स से ए होछि तमरो रेयरर ये होछि डेंसर ये होछि तमरो डेंसर कोन मीडियम तो कौन सी डेंसर जेतेबेले डेंसर रु रेयरर को जे इट वुड बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल इट वुड बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल कौन सी डेंसर जेतेबेले रेयरर को डेंसर आसे इट वुड बी टुवर्ड्स द नॉर्मल इट वुड बी व्हाट टुवर्ड्स द नॉर्मल ना एटा जाननो समस्ते जोने आर्ट स्टूडेंट एतिक तो सुनि दै थो भाबो एटा हला तमरो नॉर्मल एक्सिस एटा मु ड्रा करछि नॉर्मल एक्सिस हला तो ए पट साइड रे रेयर एपट साइड रे डी फॉर डेंसर कौन सी डेंसर जेतरे फिंगबो इट वुड बी एमिति मूव करि जबो बुझि परछन ये आवे पड़ि जबो कले नॉर्मल रु आवे ता आदर आकु कोन कहजे रिफ्रैक्शन आकु कोन कहजे रिफ्रैक्शन नाउ जेतरे हमें रेयर रु डेंसर कसबे इट वुड बी टुवर्ड्स द नॉर्मल एमिति नॉर्मल रे जबो है ना बुझि परछन सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ए भले फेनोमेनन को हम कहू रिफ्रैक्शन तो जेते बळे तमरो वेव्स मूव करे now comes to the waves एबे रिफ्रैक्शन बुझि गेलो है ना बुझि गेलो रिफ्रैक्शन now this figure एबे तमे भाबो ए जो ताले जेतरा हमें कोन से गोटे वेव्स को अर्थ से छाड़ीबा अर्थ रो डिफरेंट लेयर डिफरेंट डेंसिटी ताले एठी जो तुमको रिफ्रैक्शन मु देखेरी कोन पई बिकॉज़ ऑफ द डेंसिटी चेंजेस गोटी मीडियम रु आउ गोटी मीडियम को जाउची सेथि पई से रिफ्रैक्ट करूची फॉर एग्जांपल लाइट काच रे पकई की देखो तापर बुझो से रिफ्रैक्ट गोटी मीडियम रु आउ गोटी मीडियम को जीवो तो से रिफ्रैक्ट करिवो किबा वाटर रे पकई की देखो तुम सब बेस्ट वाटर रे पकई वाटर रे टॉर्च को पकई देखो से सीधा जीवन के बुझ परछन तो ये तुमको देख दैट मींस ये जो रिफ्रैक्शन तुमको दिखा जीवो दिस रिफ्रैक्शन आल्सो हैपेंस टू द अर्थ औ कहारो दैट विल बी द वेव्स जो तुमरो वेव्स गुडा अछि द पी वेव्स एना एस वेव्स दे विल रिफ्रैक्ट ए जब मूव करिवो थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ डेंसिटी जोटी चेंज हो सेठी रिफ्रैक्ट करछो ना बुझा पड़बन मो तुमको सेथि पय डिसकंटिन्यूटीज ऑलरेडी
पढ़ी एबे जस्ट इमेजिन कर तमरो ए हला तमरो क्रस्ट दिस वुड बी मेंटल ए रहला कोर एबे क्रॉसटा होची कोन रेयर तो रेयर रु डेंसर को जितना सो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये लाइन देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल 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 को जाय आसबे इनर कोर जाय ना डेंसिटी बढ़िबो एबे आफ्टर इनर कोर डेंसिटी कमिबो मतलब रेयर स्टार्ट्स एंड दैट वुड बी अवे ये तापरे अवे बुझिबो नॉर्मल रु दूर को भागिबो बस एबे फिगर बुझि पड़िबो बस यही गोटे सिंपल कॉन्सेप्ट पुट कर देबो वो बाहरी जो फिगर काहे केमिति ड्रा हिची एठी देखो ए तमर आसिला ना ये जेतल देखला एठी आसिला एठी जेतल एठू बाहरिबो डेंस एबे बाहरी भागिबो से दूर को भागिबो काने आडू तो आसबे नॉर्मल रेयर हे की बढ़ुची रेयर तो से कोन को अवे ना बुझा पड़िबो नै सो दैट इज व्हाई द फिगर इज लुकिंग लाइक दिस ना ये फिगर कहा पई ना ये फिगर होची तमरो पी वेव्स पई कारण पी को मु कोन कहतली सॉलिड रे जाई परिबो लिक्विड रे जाई परिबो एस कोन केवल सॉलिड रे जीवो सेति पे लिक्विड को जाई पारुनी बोली एठु ही रिफ्रैक्ट हे की पळेबो कारण एटा होची मेंटल रो स्फीयर ना बुझा पड़िबनी तो सेठु ही रिफ्रैक्ट हे की बाहर को भागी बसे तेणु करके जो एरिया रे से पहुंची पालानी दिस इज द शैडो जोन ये रे कोन शैडो जोन ऑफ एस वेव तो शैडो जोन ऑफ एस वेव इज लार्जर देन द शैडो वेव्स ऑफ पी वेव्स कारण ये लिक्विड रे जाई पारुनी सेति पे लार्ज शैडो जोन फॉर्मेशन करोची ना बुझा पड़बनी जो माने ऑनलाइन रे बुझा पड़िबो ये आसिला एमती आसिला आसिला एठी देखिला एठी लिक्विड ओके अछि सर लिक्विड तो जाई परिबनी लिक्विड रे ओके जाई सर परिबनी कुआडे करिवो ये मूव करिवो सो दैट इज व्हाई दिस वुड बी बट मूविंग अवे कारण ये लिक्विड रे जाई परिबनी एंड सेति पे 105 रु तमरो पूरा 105 ये रहबो शैडो जोन आको हमें कह कहबा शैडो जोन कहारो अर्थ रो मतलब एस वेव रो शैडो जोन अर्थात एस वेव सही एरिया रे पहुंची पारु नाही बुझी पाछन ना बुझी पानो तो एस वेव्स कौन करछि बियॉन्ड द 105 डिग्री टू पूरा 105 ए पहुंची पारु सेतमे आरो शैडो जोनटा अधिक काहे कि लिक्विड रे जाई पारु नाही ना ये कौन करू जे देखो तमे कहबो सर ए गैप काहे कि देखाउछि एठी देखो 105 रु 142 ए गोटे गैप देखाउछि एथि पई ये शैडो जोन देखाउछि आ एठी भी मध्ये गोटे छोटे शैडो जोन देखाछिबो कारण एटा सर्कुलर फॉर्म रे अछि जेहेतु सर्कुलर फॉर्म रे अछि जो वेव्सटा एठी एंटर क्लास एठी को भागी जीवो जे एठी एंटर क्लास से सीधा सीधा सी तापर एठी करिवो तो किछि ना किछि गोटिए तुमको सब शैडो एठी देखा जो शैडो जोन ए एरिया रे कारण एटा जदी स्फेरिकल शेप हे न थांता तले शैडो जोन न थांता बिकॉज ऑफ द शेप स्फेरिकल शेप जो पी वेव्स तार गोटे छोटिया शैडो जोन फॉर्मेशन करू ना बुझा पड़बनी अदरवाइज हे न थांता because of the circular shape तेणु p waves तुमको देखा छिबो 105 रु 140 एक्चुअली एटा कोन थाई सुनो एटा डिफरेंट बुक 103 रु 140 थाई एनसीईआरटी रे जदी देखिबो 103 रु 140 लेखा थिबो एनसीईआरटी रे कना बुझ बतन एपटे कमी जिवो बुझ बतो तो एठी एमती तुमको देखाइ दो से किछि नै सेटा माइनर जिंस छाड़ दियो है ना तो ये एबे बुझ परबो काहे p waves रेटी साडे चमच बिकॉज ऑफ द सर्कुलर नेचर अदरवाइज हे न थांता काने से तो सब मीडियम देख जाई करियो बुझी परछन तेणु सेठी हबनी बट जेहेतु सर्कुलर फॉर्म रे अछि सेथि पई से एठी शैडो जोनटा डेवलप करछ आ आर शैडो जोन होछि स्मॉल as compared to r large done नाउ ए ध्यान से सुनो सपोज मु एठी एस वेव को छाडिली एपटे गोटे तमरो सिस्मिक स्टेशन अछि एठी रेकॉर्ड हो ना तले गला पड ए तो आसुनी दैट मींस हमें देखिले ये आसी पारुछि एठी गोटे सिस्मिक वेव स्टेशन तो चारियोटे अछि सिस्मोग्राफ सब कंट्री अछि सिस्मोग्राफ तो जदि एठी अर्थक्वेक हैला आ तरह जो एस वेव टा ओरिजिन हैला ये एपोर्टे डिटेक्ट होनी ये कंट्री को पहुंचुनी दैट मींस एठी के आसी पारुनी कोन पे आसी पारुनी जदि से एठी जाई पारुची एठी डिटेक्ट होची एठी होनी ता अर्थात कोठी ना कोठी अर्थ गोटे ट्रांजिशन जोन अछि जोथि कहीं से आसी पारुनी अब से ट्रांजिशन जोन कोन हबो सॉलिड तो ऊपर हम देखुचे तले कोन ही परिबो गैस ही परिबो ना गैस ले तो अर्थ कोलैप्स करि जिवो ताले कोन हबो लिक्विड हबो सेतबे मु तुमको स्टार्टिंग रे कहितली जहां भी चली छी आ जंक्शन रे मु कहितली के नहीं स्टार्टिंग रे 8 बुझ बछन तेबे हमें अज्यूम कोन करू कि जेहेतु ये पहुंची पारुनी ताले दुईटा कंडीशन हेतै कारण ऊपर तो हम देखि सॉलिड के जाउ ताले इधर गैस हो न लिक्विड गैस ही पेरुनी एथि पे कारण कोलैप्स करि जिवो ताले हबो कोन लिक्विड सेथि पे हमें कंक्लूजन रे पहुंचले कि मेंटल इज अ लिक्विड एबे बुझी पाइलो सेथि पे मु तुमको आंसर कोन कहितली सिस्मिक वेव्स एबे बुझी पाइलो कि सिस्मिक वेव रो आंसर
आंसर मु कौन कहती सिस्मिक वेव्स ये हला तमरा आंसर तबे बुझ पाइला तो सेटा अज्यूम रे चलछि बुझ बता सो दैट इज व्हाई इट वुड बी इन लिक्विड स्टेज ना क्लियर टू ऑल